approach, let's close the recording. As we approach the concluding part of our lecture series of this Paryushan Mahaparva, our best offering, and I was just recollecting this, the best offering that we can provide here for Samanji and our Vandan and our respect to Samanji is by reflecting back on the learnings. અને આપણે કેવી રીતે આ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરીએ આટલા સરસ ટોપિક્સ છે કવર કર્યા છે આટલા દિવસોમાં something that we've not even touched in the past. Samanji has taken us through this depth of the Granth of Saman Suttam. And as I was going through some of these past few lectures, Kashai par Vijay kevi rite melaviye Nainu Swarup, and even the Nainu Swarup, he went into beyond just the Nishchay and Vyavharna. He gave us the depth of what are those different types of nais, Pramad, Apramad, and Rag, Dvesh. All of these topics that were covered will help us definitely to progress in our spiritual journey. Today, the last one being the Gyan Prapti no Adhikari Kon. And this is the journey that Samanji has taken us through in the past few days, where we have noticed, both Pareshbhai and I have noticed the mehnat, the hard work that Samanji puts into this, right? By preparing the questions. Every morning, early his time, he sends us these questions, the quiz, the preparations for polls and surveys. And we find it so useful that we could apply these back into our learnings of what he's taught us. અને એની માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સમજી, આપે આટલી મહેનત કરીને અમારી પાછળ પડી ગયા છો કે કાઈ બી કરીને અમે આ ગ્રહણ કરી શકીએ આ વિષય. So એની માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. We've also seen, Samanji, sometimes you sweat so much while giving the pravachans there. And the conditions there, કેટલો પસીનો બી થાય છે આપને. આપ આટલા દિવસોથી આપ અમારી સાથે જ છો સવાર અને સાંજ, તો એની માટે બી આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સમનજી. આપે અમારી માટે ખાસ કરીને બાળકોને તૈયાર કર્યા. Yesterday you prepared them to show the talent, and such amazing talent that these young children have. That you brought them in front of us. They performed so beautifully. એની માટે બી સર્વ ઈ બાળકોને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સમનજી. આપની પ્રેરણાથી, આપના મેન્ટરશિપ અને ગાઈડન્સથી તેઓ પણ આટલી પ્રગતિ કરી શકે છે, ઈ અમે જોયું અહીંયાથી. અને lastly, Samanji, in this entire preparation of Paryushan and how we bring this program to our audience and our Sangh, અમે દિલપૂર્વક આપને ખમાવીએ છીએ. અમારાથી વ્યવસ્થામાં પણ સમજી થોડી ઢીલ છૂટી ગઈ છે. અમારાથી પ્રિપેરેશન કરવામાં પણ વિનય વિવેકની ચૂક થઈ ગઈ છે. તો એની માટે પણ અમે મન વચન કાયાથી આપને ખમાવીએ છીએ, મિચ્છામી દુક્કડમ કહીએ છીએ. With that note, I will hand over to Samanji for taking us through this final topic on Gyan Prapti no Adhikari Kon. Samanji. Namaskar Mahamantra. Om Namo Arihantanam. Om Namo Ari. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Om Namo Uvajayanam. Om Namo Namo Loe Savasahunam. Namo Loe Eso Panchanamukaro. Eso
सव पावपणासनो सव पाव मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। 3 मिनट मेडिटेशन, आंखों बंद, शरीर स्थिर, ध्यान की मुद्रा, मन शांत। अपने भीतर झांके और जो कुछ पिछले 7-8 दिनों में सुना है रिफ्लेक्ट करे, इंट्रोस्पेक्ट करे और जो भी अपनी कमजोरियां हैं उसे देखे। विशेषताएं तो है ही, अच्छाइयां तो है ही, उसे विकसित करना है, उसे और अधिक बढ़ाना है, लेकिन कमजोरियों को निकालना है। जो भी है, प्रमाद, अप्रमाद, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आलस्य, ईर्ष्या, निंदा, एक अच्छे इंसान बनने की जो क्वालिटी है उसे डेवलप करना है और इंसानियत को गिराने वाली जो कमजोरियां हैं उसे निकालना है। मानवीय व्यवहार को जो बिगाड़ने वाली कमजोरियां हैं, स्वभाव की, आदत की, संस्कार की, उसे पहले देखें, उसे स्वीकार करें कि हाँ ये कमजोरी है, देखें, स्वीकारे, फिर निकालने का संकल्प करें। धर्म का अर्थ है अपने आप को एवरी डे कुछ अच्छा बनाना। आज पर्युषण पूरा होने के बाद मैं संकल्प कर सकूं तो यह संकल्प करूंगा कि कुछ न कुछ पॉजिटिव अभ्यास डेली करूंगा। रोज आधा घंटा मौन, रोज आधा घंटा स्वाध्याय, रोज 15 मिनट इंट्रोस्पेक्शन
या मेडिटेशन, रोज 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट एक्सरसाइज, परिवार के साथ संस्कार निर्माण के लिए 15-20 मिनट संगोष्ठी, इस तरह का कोई भी शुभ संकल्प करके पर्युषण की यात्रा को पॉजिटिवली विराम देंगे। तीन बार ओमकार की ध्वनि प्रयोग संपन्न। ओ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। एक घड़ी जरा दे दो, घड़ी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, शिकागो सिंगापुर जैन संघ के समस्त साधर्मिक बंधुओं बहनों, अन्य लोग भी जहां से सुन रहे हैं, देश और दुनिया से, सबको मेरी ओर से ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का आखिरी प्रवचन में प्रवेश करने के पहले 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को ही चांस मिलेगा जवाब देने का। स्क्रीन पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। जो भी है, पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जो भी जवाब दे वो हाथ का इशारा करेंगे। जिसन भाई अभी चौपड़े ले आओ टेबल। हाँ, कौन है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्या नहीं है? जैनिका बेन मेहता जी, गो अहेड, अनम्यूट करो। वंदामी नमन स्वामी, जी, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आदमी रोज किसी ना किसी को मरते देखता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। जी,
क्या नहीं है? आधा जवाब। मरना आश्चर्य नहीं है। मरना, हाँ, वो आपने जवाब ठीक दिया आधे का, कि सबसे बड़ा आश्चर्य है दूसरे को मरता देख खुद को लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। कौन सी चीजें आश्चर्य नहीं है? मिच्छामी दुक्कडम स्वामी जी, वो थोड़ा नहीं पता नहीं, है। कोई बात नहीं, पहला कोई बात नहीं। मिच्छामी पहला ही दुक्कडम की बात ही नहीं है। आधा जवाब बहुत बढ़िया दिया आपने। और कौन दे पाएंगे जवाब? आश्चर्य क्या नहीं है? वो ध्यान से सुना होगा, वो जवाब दे पाएंगे। कौन है? चलो जल्दी जरा। मैं बताया था ईसा बेबीलोन के एफिल टावर आश्चर्य नहीं है। इजिप्ट के पिरामिड भी आश्चर्य नहीं है। जो आश्चर्य यह है कि दूसरे को मरता देखकर कि मैं मरने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमाद अप्रमाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, जागृति क्यों रखनी चाहिए? जागृति क्यों रखनी चाहिए? नयन भाई। भंडामी नवम स्वामी, क्योंकि जागृति इसलिए रखनी चाहिए कि जो आदमी जागृति नहीं रखता है जी, वो नष्ट हो जाता है। अच्छा। इसीलिए जागृति पूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। यही है आंसर। यही है आंसर, कंफर्म। मेरा आंसर यही है। आपका यही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन कहेंगे? चलो एक ही व्यक्ति को चांस मिलेगा। जागृति इसलिए रखनी चाहिए कि जो जागृत रहता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो प्रमादी है उसको चारों तरफ से भय रहता है। जो अप्रमत्त है, जागरूक है, उसे किसी और से भय नहीं रहता। इसीलिए व्यक्ति को जागृत रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसके लिए सोना अच्छा, किसके लिए जागना अच्छा? नए लोग, आनंद राज जी जैन कौन है? हाँ, आप जवाब दीजिए। कल नहीं आए तो भी जवाब देना पड़ेगा। बोलो जल्दी। हाँ जी। हाँ, वंदन नमन स्वामी जी। जी जी जी। किसके लिए सोना अच्छा और किसके लिए जागना अच्छा? मैं तो कल नहीं आया था, बट मैं यही बोलूंगा कि आपकी वाइफ कल बैठे थे शायद। हाँ, शी इज आंसरिंग राइट नाउ। उसको अनम्यूट करेंगे तो वो जवाब देगी। शी इज हेल्पिंग नहीं, मी। जवाब आपको देना, लेकिन वो बैठे थे तो उनसे आपसे सीखना चाहिए। कोई बात नहीं। और कौन है? हाँ, धर्मार्थ भाई बोलिए।
वंदामी नमन स्वामी। जो धार्मिक व्यक्ति है उसके लिए जागना अच्छा है, जो अधार्मिक व्यक्ति है उसके लिए सोना अच्छा है। और दूसरा वाक्य आपने ये बताया था कि जो अहिंसक व्यक्ति है उसके लिए जागना अच्छा है, हिंसक के लिए सोना अच्छा है। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर, थैंक यू। अज्ञानी और असंयमी का सोना अच्छा है, ज्ञानी और संयमी का जागना अच्छा। पारंड पक्षी की 5 विशेषताएं कौन सी? They had, they led. रेज योर हैंड। पारंड पक्षी की, हाँ निशान सिंबल चाहिए हाथ का। पारंड पक्षी की 5 विशेषताएं। नए लोग नहीं दिख रहे हैं। कि VHS का हाथ खड़ा था ना, वो कहाँ गायब हो गया? उन्होंने म्यूट कर दिया। म्यूट मत करो, वीडियो चालू रखो तो जरा सुविधा रहे। हाँ राजेश भाई बोलो, दर्शना बेन, राजेश भाई बोलो। पारंड पक्षी की 5 विशेषताएं। हाँ जी बोलिए प्लीज। काय હોય છે, એને બે મોઢા હોય છે। તમારા 2 फोन चालू છે ઘરમાં, એક ને म्यूट કરો। हाँ कोई वांधो नहीं, बोलो। इको आवे છે ને એટલે हाँ बोलो। We can't hear you, Darshana Ben. हाँ बोलो, कंटिन्यू करो। 2 મોઢા હોય છે, આગળ। અવાજ म्यूट થઈ ગયો છે, અવાજ म्यूट થઈ ગયો છે। हाँ હવે બરાબર। તમારું બંધ કરી દો। ઓકે, એમને વિશાળ કાય, 2 મોઢા, ખૂબ જ તાકાતવાળા, અને એમને 2 ગરદન હોય છે, 3 પગ, 1 પેટ હોય છે। એ મોઢાથી ખાય છે અને બીજો જે હોય છે તે આજુબાજુ જુએ છે કે કોઈ એનો શિકાર ન કરી લે। करेक्ट, थैंक यू, अनुमोदना, खूब सरस। किसको क्या नहीं होता है? आलसी को क्या नहीं होता है? आलसी के पास क्या नहीं है? श्रेया जैन, श्रिया जैन, वीडियो ऑफ है। श्रिया जैन हाथ खड़ा है, वीडियो ऑफ है। हाँ बोलो। हेलो स्वामी जी। चालू रखो। श्रिया बेन बोलो। आलसी को सुख नहीं। बस बहुत बढ़िया, और आगे नहीं। हाँ बस आगे नहीं, ममत्व बहुत अच्छा। आलसी को सुख नहीं, बस। ममत्व करने वाले को वैराग्य नहीं। निद्रालु को क्या नहीं? नेक्स्ट। निद्रालु को विद्या अभ्यास नहीं। निद्रालु को विद्या अभ्यास नहीं है। आरती बेन कामानी सुन रहे मेरी आवाज? हेलो हाँ बोलो। निद्रालु को विद्या अभ्यास नहीं है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ममत्व रखने वाले को क्या नहीं? वैराग्य नहीं है। वैराग्य आपको नहीं, आपको नहीं। हिंसक व्यक्ति को दया नहीं है। परेश भाई, हिंसक व्यक्ति को क्या नहीं? पन्ना बेन बोलो। हेलो कैसे? वंदामी नमस्वामी समझी। हिंसक व्यक्ति को करुणा नहीं, दया नहीं। दया नहीं, बराबर, करुणा राइट आंसर। थैंक यू जय जिनेंद्र। विल गो अहेड।
आज का विषय है ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कौन। आज इस सीरीज का ये लास्ट सत्संग है, स्वाध्याय है। और जैसे कैनल भाई ने कहा, मैं बराबर 8 दिन आपके पीछे पड़ा रहा, बराबर पूरी तरह इस विषय को आपके गले उतारने का मेरा संकल्प था। जितनी मेरी पात्रता क्षयोपशम है उस अनुसार, और मैं जो भी कहता हूं करता हूं उसमें पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूं कि मेरी कमजोरी समझे या विशेषता कि जो चीज मैं करता हूं उसे पूरी तरह से करता हूं, और नहीं करता हूं तो जिम्मेदारी नहीं लेता। ये पर्यूषण की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पर थी, और उसके लिए मुझे जितने आवर्स इसके पीछे लगाने थे मैंने लगाने की कोशिश की। पसीना आना तो मेरी प्रकृति है। आवाज आवे जी? आवाज आवे जी, थैंक यू। पसीना आना तो मेरी प्रकृति है। थोड़ा थोड़ा मेरी बॉडी की प्रकृति भी पित्त प्रधान है। थोड़ा भी चलता हूं तो चेहरा लाल घूम हो जाता है, और खास करके रात को तो यहाँ पर लाइट भी हेलोजन है लगाई है, उसकी भी थोड़ी गर्मी होती है। और शब्द अंदर से जब घर्षण करके निकलते हैं तो उसकी भी बहुत गर्मी होती है। लेकिन खैर, मेरा इरादा यह था कि भगवान महावीर की वाणी जो इतनी रिलेवेंट है, इतनी प्रासंगिक है, इतनी प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों है, इसके लिए मैं कोशिश करता रहा। आज अंतिम पड़ाव, ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कौन। मुझे लग रहा था कि यह विषय तो पहले दिन होना चाहिए था। ज्ञान हम 7 दिन लेने जा रहे हैं, उसके हम अधिकारी है या नहीं। लेकिन क्रम में आज लास्ट दिन आया तो ये भी जान लेना चाहिए, लास्ट दिन का भी अपना दृष्टिकोण है। इतने दिन हमने ज्ञान प्राप्त किया तो अब देख ले कि हम उसके काबिल है कि नहीं, और नहीं है तो आज से जो चीज ज्ञान प्राप्ति के लिए अवरोधक है उसे निकालने की कोशिश करे, और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पात्रता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। मैं अपनी चर्चा एक छोटी सी बात से शुरू करूं ताकि विषय और स्पष्ट हो जाए। एक बहुत बड़े पश्चिम के लॉजिस्टिक हुए, लॉजिक शास्त्री हुए, गणितज्ञ हुए, जिनका नाम था ओस्पेंस्की, पीडी ओस्पेंस्की। पश्चिम का बहुत बड़ा विद्वान आदमी। वो एक बार रशियन मिस्टिक्स गुरुजीएफ के पास गया। रशिया का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल तत्वज्ञानी, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को प्राप्त ऊंचा महापुरुष रशिया में हुए, जिसका नाम गुरुजीएफ। जहां तक मैंने उसका अभ्यास किया, आत्म जागृत व्यक्ति, एनलाइटेंड व्यक्ति भी मैं कह सकता हूं। उसके पास जाकर ओस्पेंस्की कहता है कि
आपसे मैं ज्ञान लेने आया हूं, कृपा करके आप मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु जीएफ जानते थे कि ओस्पेंस्की कौन है। ओस्पेंस्की इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, जिन्होंने एक किताब लिखी, ऐसी किताब सदियों में कभी कोई आदमी लिखता है। ओस्पेंस्की की उस किताब का नाम, पीडी ओस्पेंस्की की उस किताब का नाम है टर्सियम ऑर्गेनम। ऑफ कोर्स इंग्लिश में किताब लिखी जिसका नाम टर्सियम ऑर्गेनम। उसका अर्थ होता है गुजराती भाषा में तीसरा सिद्धांत। आप गूगल में सर्च करेंगे, अमेज़न में सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ओस्पेंस्की की बहुत प्रसिद्ध किताब, पीडी ओस्पेंस्की, टर्सियम ऑर्गेनम, अद्भुत किताब। ऐसी किताब 100 सालों में कोई एकाध बार लिखता है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा खुद विद्वान, गणितज्ञ, लॉजिक में नंबर 1 और इंटरनेशनल फिगर पूरी दुनिया में। अब पीडी ओस्पेंस्की की इस बुक का नाम लिखोगे तो 50 टाइटल में अलग अलग यही बुक आपके सामने आए। वेल पॉपुलर पुस्तक। ऐसी कक्षा की पुस्तक आज तक दुनिया में 3 ही है, उस लेवल की किताबें। उस लेवल की पहली किताब है एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई, जिसका नाम द ऑर्गेनम। एरिस्टोटल भी एक बहुत बड़ा लेखक हुआ, बहुत बड़ा चिंतक हुआ। उसने किताब लिखी द ऑर्गेनम। द ऑर्गेनम का अर्थ होता है पहला सिद्धांत। एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई। वो इस ओस्पेंस्की के लेवल की पहली किताब। ओस्पेंस्की के लेवल की दूसरी किताब लिखी बेकन ने, और उस किताब का नाम नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम, NOVUM, नोवम ऑर्गेनम। उसका अर्थ होता है नया सिद्धांत। और तीसरी किताब ओस्पेंस्की की जो मैंने कहा, टर्सियम ऑर्गेनम, तीसरा सिद्धांत। मुझे लगता है कि शायद ऑर्डर से लिखा। ये तीनों किताब की स्क्रीन पर आपके टाइटल आप देख रहे हैं। पहला टाइटल है टर्सियम ऑर्गेनम, एरिस्टोटल ओस्पेंस्की द्वारा लिखी गई। दूसरी है द ऑर्गेनम, एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई। और तीसरी है नोवम ऑर्गेनम, वो बेकन के द्वारा लिखी गई। ये 3 किताब इस सदियों की अद्भुत किताब है। मैं केवल रेफरेंस दे रहा हूं कि ओस्पेंस्की कौन है, साधारण आदमी नहीं। थैंक यू कैनल भाई। आगे चले। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी गुरु जीएफ के पास जाता है। ओस्पेंस्की की मैंने बात की, थोड़ा बैकग्राउंड दिया। अब थोड़ा गुरु जीएफ को उस समय कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष रशियन मिस्टिक के रूप में इतना प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध था भी नहीं। उसको प्रसिद्ध करने का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता हो तो ओस्पेंस्की को। गुरु जीएफ का पहला शिष्य ओस्पेंस्की हुआ। उसके चरणों में माथा टेक दिया।
और जब माथा टेका तब गुरुजी अब जानता था कितना बड़ा ज्ञानी आदमी, और आज मेरे पांव के नीचे माथा लगा रहा है और नॉट ओनली विनीत होकर झुक रहा है, कहा कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु जीएफ के पास जाने का मतलब आग के पास जाना, कचरा कचरा सब जला देगा। गुरु जीएफ का मतलब मिसाल, आत्मज्ञान की मिसाल। लेकिन मैं ओस्पेंस्की को भी धन्यवाद दूं कि गुरु जीएफ को दुनिया के रंगमंच पर लाने का काम किया। अदरवाइज तो गुरु जीएफ आत्मज्ञानी को कोई नहीं जानता। गुरु जीएफ की भी पुस्तक है पढ़ना, उस पुस्तक का एक ही मैसेज है अप्रमाद। महावीर की वाणी में जागृति, अवेयरनेस। अवेयरनेस शब्द मेरी नजर में स्पिरिचुअल जगत में किसी ने यूज किया हो महावीर के बाद तो गुरु जीएफ। इतना बड़ा स्पिरिचुअल आदमी, लेकिन कोई नहीं जानता था। ओस्पेंस्की ने उसको दुनिया के रंगमंच पर लाकर हमेशा याद रखना, गुरु अपने आप में कभी प्रसिद्ध नहीं होता है, शिष्य ही गुरु को प्रसिद्ध करता है। रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता था भला? विवेकानंद नहीं होते तो मेरी नजर में रामकृष्ण परमहंस को भी हम नहीं जानते। विवेकानंद आए जिसने रामकृष्ण परमहंस को हाईलाइट किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई नहीं होते तो शायद महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता। महापुरुषों को हाईलाइट करने वाला उसका अंतरंग अंतेवासी शिष्य होता है। और गुरु जी को प्रसिद्ध किया। उनकी मूवी भी है, आप देखना कभी, बहुत मिलेगा। उसकी मूवी भी है, गुरु जी आदमी को हिला दे अंदर से। आध्यात्मिक प्रगति करनी है जिसको, उसको गुरु जी को पढ़ना चाहिए। खाली पढ़ना नहीं, उनकी साधना करनी चाहिए। खैर मैं ये बात कर रहा हूं कि वो गुरु जी के पास गए, उसके चरणों में गिरे। गुरु जी ने कहा कि तुझे ज्ञान लेना है, मुझे पता है तेरी ज्ञान की अकड़ कितनी है, मेरे सामने तुम ऊपर ऊपर से झुक रहे हो। और अकड़ बड़ी जोरदार थी ओस्पेंस्की की। अकड़ इतनी थी, वो जो उन्होंने किताब लिखी टर्सियम ऑर्गेनम, उसकी भूमिका में ही उसकी अकड़ दिखती है, अहंकार दिखता है। उसकी भूमिका में ही उसने लिखा है, किसने? ओस्पेंस्की ने लिखा है कि अरस्तु ने पहला सिद्धांत लिखा, बेकन ने दूसरा सिद्धांत लिखा, द नया सिद्धांत, और मैं तीसरा सिद्धांत लिख रहा हूं। लेकिन तीसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत से भी पहले था। ये उन्होंने भूमिका में लिखा। ये कितनी बड़ी अकड़, ये अकड़ की आवाज है। भले मैंने तीसरा सिद्धांत तीसरे नंबर पे लिखा, बेकन और अरिस्टोटल के पहले, लेकिन मेरा सिद्धांत पहले सिद्धांत से भी पहले था, कोई नया नहीं है। कहने का मतलब है कि मैंने जो खोज की है वो पहले से भी पहले थी, तुम्हारी किताब के पहले भी वो सिद्धांत था। इतना अकड़ा हुआ आदमी गुरु जीएफ के चरणों में झुकता है। गुरु जीएफ कहता है एक कागज ले ले। उसको रीतसर होमवर्क दिया, एक ऐसा कागज ले ले और कागज के 2 टुकड़े कर ले, एक कागज के 2 पीस कर, और कमरे में जाकर बैठ जा। कॉपी पेन ले ले, एक पन्ना ले ले, एक पेन ले ले। आधे पन्ने में वो लिख जो तू जानता है, और आधे पन्ने में वो लिख जो तू नहीं जानता। वहां बैठ जा, घंटे 2 घंटा जितना टाइम लेना हो ले लेना, फिर मेरे पास आना, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। तू लिख ले कि मैं क्या क्या जानता हूं, और तेरा ज्ञान होना चाहिए उधारा नहीं, बोरोड नहीं, बासी नहीं, दूसरे का, दिमाग का नहीं, अंदर का ज्ञान होना चाहिए। तू लिख ले तू क्या जानता है।
ताकि मुझे पता चले कि जो तू जानता है उसकी मैं चर्चा ही ना करूं। ऑलरेडी तू जानता है तो उसकी बात मैं क्यों करूंगा। जो तू नहीं जानता है उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। तो जा। वो गया साहब। रशिया में तो कितनी ठंडी पड़ती है, सर्दी में पसीना छूटने लगा, पेन चलाने की कोशिश करता है। मैं क्या जानता हूं, इंट्रोस्पेक्ट करता है, मैं क्या जानता साहब। जीवनी कहती है, एक वाक्य भी नहीं लिख पाया उस पेंस की कि मैं ये जानता हूं। ईमानदारी पहला कदम है ज्ञान प्राप्ति का। ईमानदारी से लिख तू जो जानता है। और 5 घंटे तक बैठा रहा, अंदर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो खुद जानता हो। कोरा का कोरा पन्ना लेकर आया और उस पेंस की ने गुरु जी को कहा कि सचमुच सही कहूं, मैं कुछ नहीं जानता। हालांकि मेरी किताब दुनिया में टॉप पर है, लेकिन लिखने वाला महा अज्ञानी है। इतना हृदय से जब विनीत हुआ तो कहते हैं कि गुरु जीएफ ने पूरा का पूरी अपनी आत्मा का ज्ञान उसमें उड़ेल दिया। जो लॉजिकल था उसको स्पिरिचुअल बनाया, जो शब्दों से खेलता था उसको आत्मा के साथ डूबने की विद्या सिखाई। जो अहंकार में अकड़ा हुआ था, मेरी किताब जैसी दुनिया में किसी की किताब नहीं, उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया। गुरु जीएफ ने ऐसे ओस्पेंस की जैसे 5 साधकों को अपने लेवल पर ले जाने की कोशिश की। ओनली अंगुलियों पे गिने जाने वाले लोग गुरु जीएफ के पास बैठ सकते थे, बाकी तो मैंने कहा मिसाल थी, किसी की हिम्मत नहीं थी पास में। ओस्पेंस की जाग गया और कहते हैं कि ऑलमोस्ट गुरु जीएफ ने ओस्पेंस की को एनलाइटन कर दिया, क्योंकि विनीत हो गया, झुक गया। आज भगवान महावीर के यही सूत्र है कि ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कौन, तो पहला कदम है जो विनीत है, अंदर से जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही ज्ञान प्राप्ति का पहला। Who know only who know that I know nothing. सोक्रेटिस की बात मुझे याद आती है। किसी देवी ने कहा कि सोक्रेटिस के पास चला जा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो आशीर्वाद लेना हो सोक्रेटिस से ले लो। लोग गए सोक्रेटिस के पास और कहा सुकरात, और कहा कि देवी ने भेजा है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, हमको ज्ञान दो। उसने कहा जाओ, जिस देवी ने तुझे कहा है उस देवी को कह दो सोक्रेटिस कुछ नहीं जानता है। गए सब सोक्रेट देवी के पास, वो तो मना कर रहा है, वो तो कहता कुछ नहीं जानता हूं। तो क्या इसीलिए मैं कह रहा हूं वो सब कुछ जानता है, इसीलिए मैं कह रही हूं। देवी ने कहा वो सब कुछ जानता है। फिर सोक्रेटिस के पास गए, सोक्रेटिस ने कहा आई नो ओनली दैट आई नो नथिंग। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इतना ही जानना है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो सब कुछ जानने का अधिकारी बनता है। विनय पहला गुण। 12 तप में एक तप का नाम विनय। 10वें कालिक सूत्रों में 10 चैप्टर में 2 चैप्टर विनय के, उत्तराधयन के 36 चैप्टर में पहला चैप्टर विनय का, पहला चैप्टर। लोग कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, गलत है। ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तत्वार्थ सूत्र कहता है, मैं कहता हूं गलत है। मैं तत्वार्थ सूत्र को चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मेरी हैसियत नहीं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र भी ये कहता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र पाने का अधिकारी कौन, जो विनयी है।
ज्ञान दर्शन चारित्र के पहले भी एक स्टेप रखना जिसका नाम विनय। आज की पहली गाथा कहती है, उसको समझने की कोशिश करें। आज की पहली गाथा कहती है, गाथा नंबर 170, अविनयी को ज्ञान आदि गुणों का नाश हो जाता है। ऊपर ऊपर से देखो ने, छोटे छोटे वाक्य लगते हैं, मर्म है। अविनयी, जो विनयी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। देखो, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है अगर विनयी नहीं है तो ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञान तो तब आएगा कि पहले विनय होगा। पहला ही वाक्य सा, पहली गाथा, अविनयी का ज्ञान आदि, खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान आदि सारे गुण नष्ट हो जाते। अकड़ा हुआ आदमी दुनिया में कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही जान ले। मैं बहुत चीजें मेरे दिमाग में विकल्प के रूप में आ रही, मैं साइड ट्रैक करूंगा, नहीं तो श्लोक रह जाए। यशो विजय जी इतने ज्ञानी थे, साइड यशो विजय जी, आचार्य यशो विजय जी, कि धम्मो मंगल मुक्कीटम 10वें काली की पहली गाथा का 1/4 भाग पर धम्मो मंगल मुक्कीटम, इतने 1/4 गाथा पर 4 महीना चातुर्मास में प्रवचन देते थे। और अकड़ थी बड़ी, घमंड था। जैसे उस्पेंस्की को था उसी तरह यशो विजय जी को था। और उस्पेंस्की को जैसे गुरु जी मिले, वैसे यशो विजय जी को आनंद धन जी मिले। गए आनंदन जी के, आनंदन जी खुद आए थे व्याख्यान सुनने। लंबा प्रसंग नहीं जाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आनंदन जी ने कहा, इतनी अकड़ किस बात की? तुम धम्मो मंगल मुक्कीटम पर 4 महीना प्रवचन दे सकते हो, तेरी विद्वता, तेरी बुद्धि साइड में रख, तभी महावीर का ज्ञान तुम्हें पचेगा। आनंदन जी तो समझाना चाहते थे। आनंदन जी ने कहा, एक 1/4 गाथा में 4 महीना प्रवचन देने की पात्रता के कारण इतनी अकड़? धम्मो मंगल मुक्कीटम 4 शब्द है, मैं धर्म पर 4 महीना तेरे सामने लेक्चर दूं। आनंदन जी ने कहा, बोल। कुछ समझाना चाहते थे। आनंदन जी ये बताना नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे से ज्यादा ज्ञानी हूं, लेकिन उसका अहंकार तोड़ना चाहते। बड़ा लंबा प्रसंग है। मैंने ऑलरेडी आपके सिंगापुर में ही पिछले पर्यूषण में यशो विजय जी और आनंदन जी पर मैं खुद बोला हूं। लंबा पूरा 1.5 घंटे तक बोला, सुन लेना कभी। और जंगलों में जाते हैं, आनंदन जी के चरणों में झुक जाते हैं, और फिर 10 दिन तक मौन हो जाते हैं, बस रहते हैं। बुद्धि के ज्ञान को आत्म परिणमन के लेवल पर ले गए आनंदन जी, यशो विजय जी को। अविनयी के ज्ञान आदि गुणों का नाश हो जाता है। नॉट ओनली दैट, ये नाश हो जाना, ये अविनयी रखना, उसके लिए विपत्ति है। छोटे छोटे शब्द है सब। विपत्ति है। विपत्ति मतलब आफत, आपत्ति, विपत्ति। बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी होनारत है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा अवरोध है। अविनयी के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए विपत्ति का कारण है। उसके जिंदगी में बहुत सारे विघ्न आएंगे। विनय के बिना ज्ञान लेकर बैठा, उसके जीवन में बहुत तकलीफें आएगी, क्योंकि वो अकड़ तकलीफ लाएगी। तकलीफ कोई देवता नहीं देंगे, कोई ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं आएगा तकलीफ देने। उसकी अकड़ ही उसको बहुत तकलीफ में डालेगी।
हम जब ज्ञान लेते थे हमारे गुरु के चरणों में बैठते थे, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनके चरणों में जब हम सीखते थे तो वो गुरु के लेवल पर थे, लेकिन कभी महसूस नहीं करने दिया कि हम गुरु है। गुरु की गुरुता देखो साहब, मैं महाप्रज्ञ जी के पास में बैठता था तो कभी एहसास नहीं होता था कि मैं उनका शिष्य हूं और वो मेरा गुरु है। इतनी आत्मीयता, इतना वात्सल्य, अकड़ आदमी को गिरा देती है। तो पहली चीज मैं तो यहां तक कहूं सिंगापुर वासियों, ज्ञान आए तो अच्छी बात है, ज्ञान लेने की जिज्ञासा हो तो भी अच्छी बात है, ज्ञान नहीं आए तो भी अच्छी बात है, विनय ले लेना पहले। ज्ञान की चिंता ज्यादा मत करना, विनय ले लेना। 8 दिन मैंने ज्ञान दिया है लेकिन आज का ये विनय गुण नहीं आया तो 8 दिन का ज्ञान बेकार। तुमको लगेगा वी आर एलिवेटेड, वी आर अपडेटेड, वी आर अपग्रेडेड, आपको लगेगा, लेकिन विनय आ जाएगा ना तो ये सारा ज्ञान तुमको चमका देगा। ये ज्ञान व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये ज्ञान तभी चमकाएगा कि मूल में विनय होगा। और मुझे आनंद है, मुझे 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 प्रसन्नता है कि वो विनय आप में मैं देख रहा हूं। सिंगापुर का जैन समाज ओवरऑल मुझे लगता है बड़ा विनीत, बाकी कितनी विद्वता, कितने टैलेंट, कितना स्मार्टनेस, कितना आप सिंगापुर में रहकर अपने परिवार को सेट करना, फाइनेंशियली साउंड होना, इतनी मेहनत करके परदेश में रहकर इतना अपनी जड़ें जमाना कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन ये सब सफलता प्राप्त करने के बाद आपके अंदर जो हम्बलनेस है, जो पोलाइटनेस है, वही आपको ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप चाहे कितना ही मेरा सम्मान करो, कितनी मेरी तारीफ करो, कितना ही, वो तो आपका अहोभाव है, आपकी अनुमोदना का गुण है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी क्या कमजोरियां है और मेरी क्या विशेषता है। आपके सम्मान से यदि मैं फूल जाऊं, आपके सम्मान से वो चीज मैं अपने आप को मानने लगूं, तो मेरी गिरावट को कोई रोक नहीं सकता। यही मुझे भगवान महावीर ने, यही मुझे हमारे गुरुओं ने, यही हमें हमारे वडिलों ने सिखाया, हम्बल रहना। इसका मतलब मैं थोड़ी फिलोसॉफिकल भाषा में बोलूं तो आसमान को छू लेना लेकिन तुम्हारे पांव धरती पर रखना। तुम्हारा सिर आकाश को छू ले कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पांव धरती पर रखना। मैं और भाषा में बोलूं तो आप कितना ही आगे निकल जाओ भौतिकता में और अध्यात्म में, लेकिन अपना ओरिजिनल एड्रेस याद रखना। तुम्हारा मूल क्या है, तुम कहां से आ रहे हैं, तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति क्या थी, वो याद रखोगे ना तो अहंकार नहीं आएगा, न सफलता का, न धर्म का, न बुद्धि का। क्योंकि बहुत बड़ी विपत्ति है, अविनयी आदमी बहुत बड़ी विपत्ति है खुद के लिए। और विनयी व्यक्ति को ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति होती है, यह उसकी बहुत बड़ी संपत्ति है। विनय बहुत बड़ी संपत्ति है और विनय के साथ आने वाले गुण बहुत बड़ी संपत्ति है। इन चीजों को जानने वाला ही, इस विनय और अविनय का लाभ और नुकसान को जानने वाला ही ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षा को प्राप्त करता है। फिर 2 शब्द है सब एक श्लोक में, कमल भाई 1.5 घंटा लगे अगर ऑनेस्टली मैं बोलूं ना, तभी उस गाथा को न्याय कर पाऊंगा। कितना भरा पड़ा है, जैसे जैसे समुद्र के अंदर आप डुबकी लगाओ तो रत्न ही रत्न। अभी तो आधा श्लोक मैंने पूरा किया, आधा श्लोक तो और अब शुरू हो रहा है। इन दोनों चीजों को जानने वाला, विनय और अविनय, इन दोनों को जानने वाला ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार। 2 शब्द है। मैंने कल कहा था व्हाट इज द
व्यू ऑफ द जैन एजुकेशन, जैन एजुकेशन का व्यू है, देयर आर टू टाइप ऑफ एजुकेशन, एक ग्रहण शिक्षा और दूसरी आसेवन शिक्षा। टेक्निकल शब्द याद रखना, एक ग्रहण शिक्षा, एक आसेवन शिक्षा। मैंने जो एग्जांपल दिया ना बहुत इंटेंशनली दिया है, और स्पेंस की गुरु जीएफ के पास नहीं गया था, उसके पहले ग्रहण शिक्षा थी उसकी, और गुरु चरण में, गुरु जीएफ के चरणों में माथा टेका और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, विनीत हुआ, और जीवन में गुरु जीएफ ने जो गाइड किया उस पर आचरण करने लगा, वो उसकी आसेवन शिक्षा थी। यशो विजयी जी जो विद्वता से प्रवचन देते थे वो उसकी ग्रहण शिक्षा थी, लेकिन आनंद धन जी मिले उसके बाद उसकी वो आसेवन शिक्षा थी। ग्रहण शिक्षा का मतलब है इंटेलेक्ट एजुकेशन, ग्रहण शिक्षा का मतलब है बौद्धिक ज्ञान, बुद्धि का विकास। कितना हो रहा है देखो कॉलेजों में, डिग्रियों की डिग्रियां साहब, ये ग्रहण शिक्षा है, ये इंटेलेक्ट एजुकेशन है, ये बुद्धि को शार्प करने की विद्या है, ये मेमोरी की विद्या है, और कुछ नहीं। रोबोट भी कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, मेमोरी तो कोई भी व्यक्ति बढ़ा सकता है। ये ग्रहण शिक्षा। आपने 7 दिन 8 दिन प्रवचन सुने और आपके अंदर जो ज्ञान सेट हुआ, जो इंफॉर्मेशन मिली, वो ग्रहण शिक्षा है। चलो और क्लियर करो, ग्रहण शिक्षा का मतलब गेटिंग द इंफॉर्मेशन, सिंपल, और इंफॉर्मेशन बुद्धि को भरती है। आसेवन शिक्षा का मतलब है निधिध्यासन, आसेवन शिक्षा का मतलब है जो बुद्धि में गया वो जीवन में भी आए। प्रैक्टिकल अप्रोच, अप्लाइड साइंस, वो आसेवन शिक्षा है। साहब 2600 वर्ष पहले भगवान ने कह दिया कि 2 प्रकार की शिक्षा है, एक शिक्षा बुद्धि को भरती है, दूसरी शिक्षा जीवन को भरपूर बनाती है। बुद्धि में गई हुई शिक्षा जीवन में ना आए तो खाली ग्रहण शिक्षा है, मात्र और मात्र अहंकार को बढ़ाएगी। डिग्री आएगी तो इतने पैसे लूटोगे, इतने गरीबों को लूटोगे, इतना दूसरे का शोषण करोगे, उतनी बेईमानी करोगे, तुम्हारी बुद्धि समाज के लिए उपयोगी नहीं बनेगी। इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं आसेवन शिक्षा के बिना ग्रहण शिक्षा लंगड़ी है। आसेवन शिक्षा प्रैक्टिस में आनी चाहिए। ये तपोवन में बच्चे पढ़ते, जैसे ही घर पे गए तो पता चला कि यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो इतना प्रैक्टिकल है, घर पे जाके माँ बाप सब उल्टा करते हैं। इन बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमारे घर में दिन भर माँ बाप बोलते क्यों रहते, बड़बड़ बड़बड़ बड़। बच्चे ये सीखते हैं शांत रहना, प्रकृति की गोद में रहना, मौन रहना, जरूर के बिना बोलना नहीं। और घर पे जाके जब बच्चे बोलते नहीं है माँ बाप के सामने तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा तपोवन में जाके साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया, और उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। साइकोलॉजिस्ट तो बड़ी कोई अच्छा था, उसने कहा तुम्हारा बच्चा ठीक है, वो प्रकृति की गोद में रहता है, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत। हम जो कम बोलता है उसको एबनॉर्मल मानते, जो बड़बड़ करता है उसको नॉर्मल मानते हैं। हो, ये आज का एजुकेशन। राजू भाई, हाँ सॉरी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रैक्टिस में आना चाहिए। बात चल ही रही, मैं विनंती करूं, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझते हैं कि आपने जितना सुना ना, थोड़ा प्रैक्टिस में लाना। 5 मुद्दा ही सही प्रैक्टिस बनाना, नहीं तो ये सब ज्ञान भार बन जाएगा। इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए, इंफॉर्मेशन अदरवाइज लगेज बन जाएगा।
दूसरी गाथा कहती है, अच्छा एक चीज और मैं आपको पूछ लूं, जैन एजुकेशन क्या है? आज के एजुकेशन के स्लोगन में लिखा होता है विद्या ददाति विनयम। आप भी शायद इंडिया में कभी अगर बचपन में पढ़े हो तो स्लोगन आता था विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय आता है। जैनिज्म का स्लोगन अलग है। मैं जैन एजुकेशन पर बोल रहा हूं आज जरा नए तरीके से। जैन एजुकेशन कहता है विद्या ददाति विनयम नहीं, जैन एजुकेशन कहता है विनय ददाति विद्याम। ये जैन शिक्षा है। अब समझ रहे हो? विद्या से विनय नहीं आता है, विनय होगा तो विद्या है। विनय ददाति विद्याम, ये जैन एजुकेशन। 5 कारणों से आज मैं संयम रखूं, कल थोड़ा लंबा चल गया था। गाथा नंबर 2, हालांकि 6 गाथा है आज। गाथा नंबर 2 कहती है इन 5 कारणों से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। There are 5 factors by which we can not get the knowledge. શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા વાળો અધિકારી કોણ? એજ્યુકેશન લેવાનો અધિકારી કોણ? જેમાં 5 કમજોરીઓ ન હોય। गाथा नंबर 171 कहती है, क्या कहती है? देखो 171 गाथा कहती है 5 कारणों से व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती है। नोट कर लेना। नंबर 1 अभिमान। आ बधु आजना एज्युकेशन में होवुं जोईए, काई देखातुं नथी। इंडियन एज्युकेशन सिस्टम में मने लागे कि दुनिया में पण एज्युकेशन सिस्टम में आ मूळ ज नथी ज्ञान प्राप्त करवा। अभिमान न होय ए ज माणस ज्ञान प्राप्त करवानो अधिकार। हूँ करूँ ए ज अज्ञानता सकटनो भार जेम स्वान ताणे। गामडामां एक्जाम्पल आप्युं के पेलुं गाडुं जतुं होय, बळद गाडुं, અને નીચે કૂતરું ચાલતું હોય તો કૂતરાને એમ થાય કે આ ગાડું હું ચલાવું છું। કૂતરાને કોણ સમજાવે કે તું જરા 2 મિનિટ ઊભો રહી જા, ગાડું તારા કારણે ઊભું નહીં રહે। પહેલું અભિમાન એ लिखा ને આ 5 કારણોને લઈને શિક્ષા પ્રાપ્ત થતી નથી। નંબર 1 અભિमान दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। नंबर 2 ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, बात कर चुके हम, खाली पॉइंट नोट कर। नंबर 2 क्रोध। देखो पूरा एजुकेशन सिस्टम स्पिरिचुअल हो गई साहब। एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी को भगवान ने मिला दिया। क्रोध करने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यार्थी क्लासरूम में बैठा हूं, टीचर के सामने गुस्सा करे, मैडम, हो गई क्लास की हत्या, हो गई ज्ञान की हत्या। नहीं कर सकता है। हालांकि टीचर भी ऐसे चाहिए कि विद्यार्थी की ताकत है बोल सके मैडम, बोलने की हिम्मत हो। शिक्षक भी ऐसे नहीं, बच्चे भी ऐसे नहीं, वातावरण भी ऐसा नहीं, एजुकेशन बोर्ड भी ऐसा नहीं। दोस्तों मूल में जाकर खोजो ना, कुआ में हो तो हवाड़ा में आवे। एजुकेशन मिनिस्टर भटकेला हो तो आगळ क्या जाए। पण आपणे एमने दोष देवाथी कई न थाय। आपणे आपणा लेवल पर जे करी शकीए करवुं। नंबर 2 क्रोध। क्रोधी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने एक वाक्य पढ़ा था, शायद आपको कहा था कि नहीं, मैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक वाक्य में बोल दूं। आज लास्ट दिन है ना, तो थोड़ा मेरी ओर से धर्म प्रभावना। अगर गुरु का स्वभाव गर्म हो ना, अगर ज्ञान देने वाले का स्वभाव थोड़ा गर्म हो ना, तो शिष्य को अन्यथा लेने के बजाय उसको अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। अगर गुरु गर्म हो जाए तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। उसके पीछे भी शिष्य का भला वो चाहते हैं। और गुरु अगर शिष्य पर गर्म हो जाए
तो शिष्य को अन्यथा नहीं सोचना है, अपनी सहनशीलता की पात्रता बढ़। तीसरा प्रमाद, खाली नाम गिना दूं, व्याख्या का समय नहीं। प्रमादी आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। प्रमादी मतलब होमवर्क करने में आलस, सुस्ती, फिर करूंगा, बाद में करूंगा। અને મેં અમેરિકામાં ખાસ જોયું, અમેરિકામાં તો ખાસ મેં જોયું કે શુક્રવારે ટીચર હોમવર્ક આપે ને તો વિદ્યાર્થીઓ હોમવર્ક ક્યારે કરે? રવિવારે રાતના 12 વાગે, કેમ કે નેક્સ્ટ ડે જવાબ આપવાનો છે ને સ્કૂલમાં. શનિ રવિવાર મોજ કરે, રાતના 11 વાગે યાદ આવે, ઓહો હોમવર્ક કરવાનું તો રહી ગયું. જાણી જોઈને ટેન્શન ઉપાડે, પહેલે કરી લેવું જોઈએ. પ્રમાદ મતલબ લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. પ્રમાદી માણસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કરી શકે. જેને લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે, જેને રુચિ જ નથી ભણવામાં, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. હાલાકી એ વસ્તુ અલગ છે કે આપણે રુચિ નથી એવા જ વિષયો ભણાવીએ છીએ, એ વાત અલગ છે, એમાં નહીં જઈએ. આ સમણ સુત્તમ તમે અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તમને જો રુચિ ન હોય તો તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર નથી. રુચિ પહેલા જોઈએ, ઇન્ટરેસ્ટ જોઈએ, પછી બેસો મારી સાથે. રુચિ, પ્રમાદ ત્રીજો દુર્ગુણ ન હોવો જોઈએ. પછી કરીશ, સ્વાધ્યાય પછી કરીશ, વાંચન પછી કરીશ, ગાથા પછી કરીશ, અધિકાર ગયો. નંબર 4 રોગ. ઓહો કેટલું પ્રેક્ટિકલ. રોગી માણસ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકારી. બીમાર વિદ્યાર્થી હોય, હું વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે. शिक्षक बीमार हो, हूं विद्या आपे. कितना प्रैक्टिकल. भगवान महावीर ने कहा ज्ञान लेना हो तो तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए. आप प्रैक्टिकली देखो ना, आप यहाँ जितने बैठे हैं, अगर आप बीमार होंगे तो आप जल्दी ग्रास नहीं कर पाओगे. स्वस्थ रहना भी जरूरी है. कौन स्कूलों में, कौन कॉलेजों में सिखाते स्वस्थ रहने? कचरा खा खा के आते हैं, पैकेट वाले फूड, कचरा पैकेट वाले फूड खा के आते हैं, जिसमें दुनिया भर का गंदा तेल और दुनिया भर की वासी चीजें खाते हैं. मैं तो देखते रहता हूँ, बच्चों में स्पिरिट ही नहीं है, बच्चों में एनर्जी ही नहीं है. साहब, बच्चे को आधा किलोमीटर चलने को कहा जाए तो पेट में दुखता है, पाँव में नहीं. चलने की वृत्ति नहीं. साहब, रोग. कौन सिखाए बच्चों को कि तुम स्वस्थ रहो? मेरा सद्भाग्य है कि हमारे गुरु ने सिखाया. हमारे गुरु हमको कहते थे कि ध्यान रखना बेटा, आपका काम धर्म का प्रचार करना है, संघ की प्रभावना करना है, तेरा शरीर स्वस्थ रखना है, क्योंकि तेरा शरीर तेरा नहीं है, संघ का है. तुम काम नहीं कर पाओगे. और आज मैं 40 कंट्री घूम के आया, कभी भी कोई प्लान हमारा फेल नहीं हुआ, कारण कि मेरा शरीर ने मुझे साथ दिया. आज तक मैं किसी कंट्री में गया और मुझे पता नहीं कि मुझे कोई लेक्चर कैंसिल करना पड़ा हो बीमारी के कारण. ये बड़ी अपनी जागृति भी होनी चाहिए और कृपा भी. तो रोगी आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता. आखो दिवस दवाओ ज खाधा राखे, नास्ता घणा ओछो करे, दवानी क्वॉन्टिटी વધારે હોય. दवा खाओ वांधो नहीं, दवा नहीं खाओ डॉक्टर करसे हूँ, दवा नहीं खाओ तो मेडिकल स्टोर वाला करसे हूँ बिचारा. एना माटे लाइसेंस लઈને આટલા વર્ષ ભણે છે થોથા. हमारे गुरुजी महाप्रज्ञ जी कहते हैं एक बात कि आप बीमार पड़ो तो 3 काम करो. नंबर 1, डॉक्टर को दिखाओ. पूछा क्यों? तो कि डॉक्टर बेचारा जी सके. नंबर 2, डॉक्टर जो दवा लिख दे वो मेडिकल स्टोर में जाके ले आओ, क्योंकि फार्मासिस्ट भी बेचारा जी सके. और दवा घर पे लाके खाओ मत, ताकि तुम भी जी सको. खा खा के हम मरते हैं और उन दोनों को जिंदा रखते हैं. स्वस्थ रहो मेरे भाई बहन, स्वस्थ रहो. सिंगापुर में जो लोग भी अपने लगभग तो विदेशों में तो बहुत अवेयरनेस है. विदेशों में तो लोग खाते भी है तो सावधानी से, लोग पीते भी है तो सावधानी से. पीते मतलब हाँ, ये जूस ने पानी,
पूरी सावधानी से। हाँ, अरे ड्रिंक भी लेते हैं, चलो ना अल्कोहल, अगर ड्रिंक भी लेते हैं तो हिंदुस्तान का ड्रिंक और वहां का जमीन, या तो जरा सा एक घूंट लो तो स्वर्ग की बातें करने लगेगा आदमी। एक घूंट ले तो यहाँ स्वर्ग का नशा चढ़ता है। वहां आदमी, मैंने देखा लंदन में इतना ठंडा प्रदेश, लोग ड्रिंक भी करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। और उपनिषदों में तो प्रार्थना की गई, संकल्प किया गया उपनिषदों में, जीवेम शरदः शतम, प्रार्थना की है भगवान एવી શક્તિ આપ કે 100 વર્ષ સુધી મારી ઇન્દ્રિયો, મારું મન અને મારા હાથ પગ એક્ટિવ રહે। કેટલા વર્ષ સુધી? 100 વર્ષ સુધી। આજકાલ તો પહેલા જેવા થાકી જાય કોઈ જીવવું જ નથી, ઉપાડી લે તારું પણ હું કામ આટલું જલ્દી? આ હિલ સ્ટેશન પર આવ્યા છો, એન્જોય કરો ને પછી તો મોક્ષમાં જવાનું છે, અત્યારે એન્જોય કરો। आलस, रोग कितने हो गए? नंबर बोलो। नंबर 1 अभिमान, ईगो। नंबर 2 क्रोध, एंगर। नंबर 3 प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है लैक ऑफ इंटरेस्ट। प्रमाद का यह अर्थ है रुचि नहीं होना। नंबर 4 रोग। और नंबर 5 आलस्य। प्रमाद और आलस्य अलग है, इसलिए मैंने प्रमाद को इंटरेस्ट कहा, आलस्य को मैं कहता हूं, आलस्य का मतलब निष्क्रिय होना, पड़े रहना, एदीपणु। खाधा पछी 6 भाखरी खाधा पछी हुई रहे, आ एदीपणु। विद्यार्थी एवो होय जे क्यारे ओवर ईटिंग न करे। विद्यार्थीनो खोराक बहु ओछो होय, जेटલું ઓછું ખાશે ને એનું દિમાગ એટલું વધારે કામ કરશે। જેટલું વધારે ખાશે લોહી બધું પચાવવામાં જશે, ઉપરનો માળ ખાલી। આ કેટલું મોટું વિજ્ઞાન છે। આ 5 વસ્તુ ના હોવી જોઈએ, સીધી સટાક વાત છે। 5 વસ્તુ ફરી બોલું, રિપીટ કરીને, રિપીટ કરવાનો દોષ લાગે તો પણ, અભિમાન, ક્રોધ, પ્રમાદ, રોગ અને આળસ। આળસને અંગ્રેજીમાં કહેવાય લેઝીનેસ, પ્રમાદને અંગ્રેજીમાં કહેવાય લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ। બંને વસ્તુ अलग છે। આગળ जाओ। इन 8 स्थितियों में अथवा तो इन 8 कारणों को लेकर मनुष्य शिक्षाशील कहा जाता है। Who is knowledgeable? Who is educated? Who is शिक्षित? शिक्षित कौन? जिसके अंदर 8 क्वालिटी। आज तो सब चीजें भगवान ऑर्डर में ही बोल रहे हैं। इतनी ऑर्डर में भगवान खुद लिख के चले जाए, फिर हमारे जैसे को तो कितना सहज हो जाए। 8 चीजें, जिसके अंदर 8 चीजें देखो ना, उसको ज्ञानी मान लेना, उसको एजुकेटेड मान लेना, उसके चरणों में हाथ जोड़ के झुक जा, जिसके अंदर ये 8 हो। नंबर 1, किसी की हंसी मजाक न करे। हंसी मजाक नहीं करो, हसो खरा, मजा पण करो। बे अलग अलग होय तो हारू, हसो पण खरा, मजा पण करो, फन। लेकिन हसी मजाक, टोंट में कोईनी कमजोरियों पर हसवू अने टोंट में कोईक ना वीकनेस नी मजाक करवी, ये हसी मजाक छे। कोईनी हसी मजाक न उडावो। पार्टीओ में जाए 8-10 जना भेगा थाय, हसी मजाक ज उड़ाड़ता हो एक बीजा। सावधान, ये हसी मजाक कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। अपनी जीभ को जब ऐसे 10 लोग इकट्ठे होने, पूरा कंट्रोल में रखना। प्रवाह में आकर क्या क्या बोल देते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते। नंबर 1, हसी मजाक जे न करे ए मानस ज्ञान ज्ञान प्राप्त करवानो अधिकारी। नंबर 1। नंबर 2, जो પોતાની ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કાબુ રાખી શકે એ માણસ એજ્યુકેટેડ। proper control of your senses and of your mind. proper એક વિવેક પૂર્વકનો ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કંટ્રોલ, એ માણસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકારી।
વિદ્યાર્થી એને કહેવાય, સ્ટુડન્ટ એને કહેવાય કે જેની ઇન્દ્રિયો સંયમિત હોય, વાંચતી વખતે એનું ધ્યાન વાંચવામાં હોય, સાંભળતી વખતે એનો આઈ કોન્ટેક્ટ, જે પ્રવચન આપે છે, જે લેક્ચર આપે છે, એ શિક્ષક ઉપર હોય. ટીચર ક્લાસ લેતા હોય ને મારી નજર ચારે બાજુ ફરતી હોય, મને જ્ઞાન લેવાનો અધિકાર નથી. આઈ કોન્ટેક્ટ, આમાંથી આઈ કોન્ટેક્ટ આવ્યો, આંખનો સંયમ આઈ કોન્ટેક્ટ છે. તો ઇન્દ્રિય અને મનનો કાબુ. મનનો કાબુ કેમ કીધો? તમે જ્ઞાન લેતા હોય ત્યારે તમારા મગજમાં વિકલ્પો ન ચાલવા જોઈએ. અહીંયા બેઠા હું લેક્ચર આપતો ને તમારા મગજમાં વિકલ્પો ચાલતા હોય, ચાલે કે નહીં? હું એ ઘણી વાર શ્રોતા બનીને બેસું ને, કોઈ વક્તા લેક્ચર આપતો, હું ક્યારેક ઘણી વાર શ્રોતા બનીને બેસું, ત્યારે મને ખબર પડે, ઓહો શ્રોતા બનવું બહુ અઘરું છે સાહેબ. મને ઘણી વાર લાગે વક્તા બનવું છે, શ્રોતા બનવું કેટલું અઘરું. વક્તા હોય ત્યારે એને વિકલ્પ ના આવે, કેમ કે બોલવાનું હોય. શ્રોતા તો ખાલી બેઠો છે, કેટલાય વિચારો એના મગજમાં ચાલતા હોય. સાંભળતી વખતે તમારા મગજમાં વિકલ્પો ચાલે છે તો તમારું મન કાબુમાં નથી. કેટલી ડીપ વાત છે. એટલે ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કાબુ, આ બીજું લક્ષણ. ત્રીજું લક્ષણ, किसी की गुप्त बात प्रकाश में न लानी चाहिए. किसी की गुप्त बात प्रकाश में मत लाओ. वो ज्ञानी. ગુજરાતીમાં કહેવાય, કોઈકની સિક્રેટ વાત તમે લોકોને અહીં ત્યાં પ્રચારિત ન કરો કે આ ભાઈ આવો, ફલાણો આવો, ફલાણી આવી, તે આમના વિશે સાંભળ્યું, કઈ ખબર નથી, બે અહીં બેસ મારી બાજુ, તને કહું, માંડીને બધી વાત કરું. અરે માંડીને કઈ નથી કરું, તું મંડ શાંતિથી. देखो, एक तरफ हमने कहा था कि माया नहीं रखनी, छुपाना नहीं, कहा था ना, छुपाना नहीं और चीट नहीं करना. माया, 4 कषाय में माया की बात कही थी. वहां मैंने कहा था छुपाना मत, और यहाँ कहते हैं कि गुप्त रखो, छुपाओ, प्रकट मत करो. तो कंट्रोवर्सी लगती है ना बात. मैं जानबूझ के क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ. दोनों में बहुत फर्क है. वहां पर अपनी बात नहीं छुपाना है, यहाँ पर दूसरों की बात छुपाना है. अपनी बात छुपाना माया, दूसरों की बात छुपाना ये विवेक है, वो माया नहीं है. મારી કોઈ ગુપ્ત વાત તમને ખબર હોય ને તો તમારે કોઈને કહેવાનું નહીં, મને કહેવાનું. મને તો ખબર જ નહીં, આખી દુનિયામાં ઢંઢેરો પીટ. અને જ્યારથી વોટ્સઅપ આવ્યું ત્યારથી તો કહેવાનું હું. વોટ્સઅપમાં નેગેટિવ સમાચારો વધારે ફેલે, પોઝિટિવ કેટલા? નેગેટિવ. આજે સવારે હું જોતો તો 6 વાગે મિચ્છામી દુક્કડમના 1000 મેસેજ આયા. એ 1000 માંથી 5 સિવાય હું કોઈને ઓળખતો નથી, કોઈની સાથે બોલવાનું કામ નથી. મન કે મિચ્છામી દુક્કડમ. હું કોઈને પણ મિચ્છામી દુક્કડમ લખતો જ નથી. એના ફોનમાં આપણે ટ્રાફિક જામ હું કામ કરવો મેસેજ મોકલીને? હું એને જ મોકલું જેની સાથે મારી બોલચાલ થઈ હોય, મને ખબર હોય કે આની સાથે મારો બહુ વાર્તાલાપ થયો, કદાચ કે ઠેસ પહોંચી હોય, તો એને હું પર્સનલી નામ લખીને કહું મિચ્છામી દુક્કડમ, કેમ કે બોલવાનું કામ પડ્યું છે 5 વાર, તને હર્ટ થયું છે, માફી માંગ. હવે તો એવું ઉપડ્યું છે, ભગવાને 5 પ્રકારની ક્ષમા બતાવી, ઉપકાર ક્ષમા, અપકાર ક્ષમા, સ્વભાવ ક્ષમા. હવે તમારે 6ઠ્ઠી ક્ષમા ક્રિએટ કરવી છે તમારી કૃપાથી, ઇલેક્ટ્રોનિક ક્ષમા. આ 6ઠ્ઠી ક્ષમા ઇલેક્ટ્રોનિક. 5 તો ગઈ. ઇલેક્ટ્રોનિક કોઈ મતલબ નથી. મેં તો કેટલી વાર લખ્યું, અને ઘણા તો પર્યુષણ આવે એના પહેલા મન વચન કાયા એ, અને એવા બીજાની કોપી એન્ડ પેસ્ટ, પાછું એ ઉધારો. પોતાનું તો કઈ નહીં, એવું આમ ડેકોરેટ કરીને કોઈ મોકલાવ્યું કે હાવ નવરો બેઠો એટલે સેટ કર્યું હોય, અને એ મેસેજ આપણે બધાને કોપી. આજે હવારથી ઓહો 1000 મેસેજ. મિચ્છામી દુક્કડમ રમત નથી, આ કોઈ મજાક નથી. મિચ્છામી દુક્કડમ એને જ તમે કહો જેની સાથે રીતસરની તમે કોઈ ભૂલ કરી છે, ગમે તેને તમે. અને આવા માણસો પછી એવા હોશિયાર, 2 સાથે દુશ્મની હોય ને, 5 વર્ષથી બોલતા ન હોય, એને તો ખબરદાર જો મેસેજ મોકલે, એને ક્યારેય ના મોકલે. અમારા જૈન ધર્મ
बोले 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अब का, 7 लाख देव का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख केंद्रिय, 4 लाख नारची, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंद्र पंचेंद्रिय, 4 गति 84 लाख योनि સાથે રેણુબેન કોઈ પણ દોષ લાગ્યો હોય તો તસ્મિચ્છામિ દુક્કડામ 84 લાખ યોની સાથે ખમત ખામણા કરી લીધા. બીજું તારા ભાઈનો કોર્ટમાં કેસ ચાલે એનું તો કે એક્સેપ્ટ માય બ્રધર, એને હું ન ભૂલી શકું. વાત માં કરો સ્વામીજી, એની વાત ન કરો, ઇતિહાસ જાણવા જેવો નથી. આ કોઈ ઇતિહાસ છે? ક્ષમા તો આપણે શું સમજીએ છીએ સર? કોઈની ગુપ્ત વાત પ્રકાશિત ન કરો. ગણેશ પેટ એમને મોટું નતું, લાડવા નતા ખાતા કઈ, એ તો પૂજારી ખાય. ગણેશજીને લાડવા ચડાવે, ખાય કોણ? આમાં બોલો કોણ ખાય? પૂજારી. ગણેશજી બિચારા ખાય. ગણેશજીનું પેટ મોટું છે એનો મતલબ ગણેશજી દરેક વાત પચાવી જતા હતા. ગણેશજી ગંભીર હતા. એના કાનમાં કોઈ વાત જાય, કાન મોટા, આંખ ઝીણી. તમે જુઓ, આંખ પેનિટ્રેટ કરે એવી આંખ, એટલી બધી ઝીણી સાહેબ, શાર્પમાં શાર્પ વસ્તુ જોઈ શકે. અને પેટ મોટું, બધું પચાવી લે. કાન મોટા, બધું ઉદારતાથી સાંભળે, બોલે ઓછું, સાંભળે વધારે. જીભ તો ઢકાયેલી સૂંઢથી, હાવ મૌન જ. આ બધા લક્ષણોથી શીખો. ખેર, કિસી કી ગુપ્ત વાત કોઈને ન કહેજો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. રોજ સૌ તમે પ્રાર્થના કરો જ છો ને? રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, હે ભગવાન, બીજું કઈ મળે ન મળે, કોઈની ગુપ્ત વાત જે મારા કાન સુધી પહોંચી છે હું શેર નહીં, ત્યાં મારા અંતર મનમાં જ દફનાવીશ. તમારી એક છીછરાપણાના કારણે એ વ્યક્તિનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાશે. સાવધાન રહો. આ નાની સૂની વાત નથી. કોઈએ તમને શ્રદ્ધાથી એની ગુપ્ત વાત કીધી, પોતાને ગાઈડન્સ લેવા માટે, રિલેક્સ થવા માટે, અને તમે ઢંઢેરો પીટો. આપણે ત્યાં જૈન આચાર્યનો એક મર્યાદા છે. જૈન આચાર્ય પાસે લોકો પ્રાયશ્ચિત લેવા જાય કે ગુરુ મહારાજ, મારી આ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, મને પ્રાયશ્ચિત આપો. ગુરુની મર્યાદા છે કે ગુરુ જયારે પ્રાયશ્ચિત આપે ને ત્યારે ગુરુની એટલી જવાબદારી વધી જાય, ગુરુ અને શિષ્ય આ 4 કાન સિવાય એ વાત 5મા કાન સુધી ન પહોંચે. અને 5મા કાન સુધી પહોંચે તો ગુરુને પ્રાયશ્ચિત આપે. તમે કોઈ તમારી ગુપ્ત વાત મને કીધી કે સ્વામીજી આ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, પ્રાયશ્ચિત આપો, એ તમારી ભૂલ હું જો એક પણ વ્યક્તિને શેર કરું, હું મહા પ્રાયશ્ચિતનો ભાગીદારી બનું છું. આ મર્યાદા કીધી. ગુપ્ત વાત પ્રકાશિત ન કરે. નંબર 4, અશીલ ન હો. અશીલ ન હો. અશીલ ન હો એનો અર્થ છે જેનું વર્તન તોછડું ન हो. शील का मतलब है संस्कार. शील का मतलब खाली ब्रह्मचर्य नहीं है. शील का मतलब है ब्रह्म जेवी चर्या. शील का मतलब है महापुरुषो जेवुं आचरण. शील नो मतलब छे कोईक महान आत्माओं जेवी रीते जीवी गया छे एवी रीते जीववानी कोशिश. एक शब्द में बहुत सिंपल भाषा में तमने समझावी, तोछड़ू वर्तन न कर तो ज ज्ञान प्राप्त करी शकाय. छठ्ठું लक्षण, अति रस लोलुप न होवुं. આવી ગયું જો. પહેલામાં કીધું રોગ ન હોવો જોઈએ, અહીંયા એનો જવાબ આપી દીધો. અતિ રસ લોલુપ ન હોવું. ટેસ્ટી ડીશ આવે, ખાવાનો કંટ્રોલ છૂટે, આ અતિ લોલુપ. अति लोलुप नहीं हुआ. अक्रोधी रहना. जेना स्वभावમાં क्रोध ना होय एवी व्यक्ति. क्रोध करवो पड़े अलग वस्तु, जेने स्वभावમાં क्रोध ना હોય, અંદરમાં જેને ક્રોધ ના હોય, ડિસિપ્લિન થી બહાર કરવો પડે અલગ, અંદરમાં કોમળ હોય. અને 8મું લક્ષણ, જે સત્યમાં રત હોય, એટલે કે ઈમાનદાર. મારી ભાષામાં સત્યમાં રતનો મતલબ છે જે પ્રામાણિક હોય, ઓનેસ્ટ હોય, ઈમાનદાર. આટલી વ્યક્તિ શિક્ષાશીલ કહેવાય. 174મી ગાથા કહે છે
સ્વાધ્યાય અને વાંચન કરવાથી શું લાભ થાય? જેન એજ્યુકેશન, સત્સંગ કરવાથી, સ્વાધ્યાય કરવાથી, પુસ્તક વાંચવાથી, વાંચન કરવાથી શું લાભ થાય? 5 લાભ થાય. આપણે બધાને શીખવાડીએ વાંચો વાંચો વાંચો, સ્વાધ્યાય કરો સ્વાધ્યાય કરો, પણ ફાયદો શું? આ 5 फायदा. स्वाध्याय करने से नंबर 1 ज्ञान की प्राप्ति होती है. स्वाध्याय करो तो ज्ञान की प्राप्ति થાય. नंबर 2 चित्त एकाग्र बने. स्वाध्याय करो तो તમારું ચિત્ત એકાગ્ર બને. નંબર 3 ધર્મમાં સ્થિરતા આવે. તમે ધર્મથી વારંવાર વાતમાં ડગી જાઓ છો ને, તમે સ્વાધ્યાય કરો ને, યુ વિલ બી સ્ટેબલ ઓન યોર રિલિજિયસ પાથ. તમે ડગમગ નહીં થાઓ. ત્રીજું લક્ષણ, સ્વાધ્યાયનો ત્રીજો ફાયદો, તમને ધર્મમાં સ્થિર કરશે. ચોથો ફાયદો, બીજાને સ્થિર કરવામાં આવી વ્યક્તિ મદદ કરશે. दूसरे को स्थिर करने में ऐसा स्वाध्याय करने वाला मदद करेगा. जो स्थिर है वही दूसरे को स्थिर कर सकेगा. और 5वां लक्षण, शास्त्रों का अध्ययन करते करते करते, स्वाध्याय करते करते ऐसा व्यक्ति ज्ञान समाधि में लीन हो जाता है. अंतिम स्वाध्याय का फायदा, अंतिम फायदा, स्वाध्याय करते करते पूरा कोर्स करो तो 5वें तक पहुंचो. 5वां फायदा यह है, ज्ञान समाधि में लीन जाओ. ये ज्ञान समाधि क्या है? ज्ञान समाधि क्या है मैं बताऊं. एक गाथा को लेकर, एक श्लोक को लेकर आप उस पर चिंतन करो. जैसे भी समण सुत्तम का व्याख्यान पूरा हो जाए, कभी मौका मिले तो एक गाथा लेकर पढ़कर उस पर चिंतन करो. चिंतन करते 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 चिंतन छूट जाए, आप निर्विचार हो जाओ, ये ज्ञान समाधि. समझाय छे? वांचता 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 ए वांचवा ઉપર चिंतन करता करता, પેલા વાંચો, વાંચવાની ચોપડી સાઈડમાં, હવે મગજમાં ચિંતન કરો. ચિંતન કરતા 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 વિચાર છૂટી જાય અને તમે નિર્વિચારમાં ચાલ્યા જાઓ. આનું નામ જ્ઞાન સમાધિ. વાંચતા વાંચતા વાંચવાનું છોડીને શૂન્ય થઈ જવાનું. અને લગભગ મેં જોયું છે, મારી જિંદગીમાં અનુભવ કર્યો છે કે સારામાં સારું ધ્યાન કરવું હોય ને તો થોડું પેલા વાંચવું. અમારો અનુભવ એમ કે હું થોડી વાર અડધો કલાક 3-4 પાના વાંચીને પછી આંખ બંધ કરું ને, ધ્યાન એવું મજાનું લાગે સાહેબ. એમને બેસો તો ના લાગે. ચેક કરી જોજો. આ બધા પ્રયોગ કરો મિત્રો. જેને ધ્યાન ના લાગતું હોય ને સીધા ધ્યાનમાં ના બેસો. પેલા 5-10 મિનિટ 2 પાના વાંચો, પછી મૂકીને ધ્યાનમાં જાઓ. છેલ્લો મુદ્દો, 175 की गाथा कहती है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी कौन? जो हमेशा गुरुकुलवास में रहता है. मूल मुद्दो હવે શરૂ થાય છે. આ તો બધી ભૂમિકા હતી. જે ગુરુકુળવાસ में रहता है, ગુરુના સાનિધ્યમાં રહે. ગુરુકુળવાસમાં રહે એટલે જે ગુરુના સાનિધ્યમાં રહે. આજ તો તકલીફ છે કે બાળકો પોતે જ અનાથ છે. અનાથનો મતલબ ગુરુ જ નથી આજે. તો ગુરુકુળવાસમાં રહેવાની વાત ક્યાં આવી? પ્રોપર ગાઈડ કરવા વાળું ગાઈડ જ નથી આજે. એટલે હું આજના યંગસ્ટરને અનાથ કહું છું. અનાથ બાળકો છે, મા બાપ છે, અનાથ, કોઈ ગાઈડ કરવા વાળું. આજના એજ્યુકેશનમાં અનાથપણું વધી ગયું છે. દુનિયામાં હું ઘણી વાર કહું છું, સમય થવા આવ્યો છે, હું ઘણી વાર કહું, દુનિયામાં વિવેકાનંદની કમી નથી, દુનિયામાં રામકૃષ્ણ પરમહંસની કમી છે. વિવેકાનંદ તો કેટલાય છુપાયેલા બેઠા છે, પણ જો રામકૃષ્ણ હોય જે વિવેકાનંદને ઓળખી અને નરેન્દ્રમાંથી વિવેકાનંદ બનાવી શકે. શિષ્ય તો ઘણા છે,
ઓસ્પેન્સ્કી જેવા, પણ ગુરુ જેફ જોઈએ જે ઓસ્પેન્સ્કીની અંદર એનું જ્ઞાન બહાર લાવી શકે, જે હંમેશા ગુરુકુળ વાસમાં રહે, ગુરુની અંદરમાં, પ્રતિમાની અંદરમાં નહીં, મૂર્તિની અંદરમાં નહીં. મૂર્તિના દર્શન કરવા બહુ સારા, ભગવાન મહાવીર સ્વામીની પ્રતિમા મંદિરમાં બિરાજમાન છે, દર્શન કરવા બહુ સારા, એક ભાવ આવે, એક શ્રદ્ધા આવે, પણ જ્ઞાન લેવું હોય તો જીવંત ગુરુની બાજુમાં બેસવું પડશે, મૂર્તિની બાજુમાં નહીં. ક્ષમા કરજો, મૂર્તિ શ્રદ્ધા આપી શકશે, જ્ઞાન નહીં આપે. એટલે આપણે ત્યાં નમો આયર્યાણમ પદ આવ્યું. કેમ? નમો અરિહંતાણમ હતું તો આચાર્યની શું જરૂર હતી? અરિહંતની ગેરહાજરીમાં મૂર્તિ જ્ઞાન ન બની જાય, એટલે જીવંત ગુરુ છું જે હંમેશા ગુરુકુળ વાસમાં. નંબર 2, જે ज्ञान के अध्ययन के समय तप करता है वो ज्ञान प्राप्त करने का, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं. ज्ञान स्वाध्याय करવો હોય ને, અધ્યયન કરવું હોય તો તપ કરવું જોઈએ. પહેલા સમણ સુત્તમ વ્યાખ્યાન ચાલુ કર્યું તો 3 ટાઈમ ખાઈને બેહી ગયા હતા કે હા, જો કે એકચ્યુઅલી મારે પહેલા કેવું જોતું તો તમારો દોષ નથી, હું જ ભાગીદાર છું. કોઈ પણ નવો સ્વાધ્યાય શરૂ કરો, કોઈ પણ નવો ગ્રંથ વાંચો, કોઈ પણ નવું શાસ્ત્ર વાંચો, એના પહેલા નાનું મોટું તપ કરો, એમને શરૂ ના કરો. એક આઈમ્બેલ કરીને કોઈ ગ્રંથ વાંચવાનું શરૂ કરો, એક એકાશનું કરીને કોઈ ગ્રંથ વાંચવાની શરૂઆત કરો. અહીંયા લખ્યું છે ज्ञान के अध्ययन के समय जो तप करता है उन्हीं व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का, थोड़ा तप करके ज्ञान प्राप्त करो. मौन भी तप है. मैं निर्णय कर लूं कल से मैं ये ग्रंथ पढ़ूंगा ना तो आज मैं 8 घंटा मौन करूंगा, ये तप है. मैं उपवास करूंगा, ये तप है. मैं एकांत में रह के अध्ययन करूंगा, ये तप है. जो प्रिय ही करता है और जो प्रिय ही बोलता है वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी. जो प्रिय ही करता है वो प्रिय ही बोलता है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वो है जिसकी वाणी में मिठास हो, टोंट में बोलने की आदत न हो, वही व्यक्ति. तो कितने लक्षण बताए? 4. गुरुकुलवास में रहना, तप करके ज्ञान शुरुआत करना, प्रिय करना, योर एक्शन शुड बी एप्रिशिएटेबल, प्रिय एंड प्रिय बोलना, वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है. 176 की गाथा अंतिम कहती है जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जल उठते हैं एवं वे खुद प्रकाशित रहते हैं, उसी प्रकार आचार्य दीपक के समान होते हैं, गुरु दीपक के समान होते हैं. वो खुद प्रकाशित रहते हैं और अन्य को भी प्रकाशित करते हैं. यहाँ पर गुरु की महिमा गाई गई कि गुरु एक ऐसा हो जिसका दीप प्रज्वलित हो और अनेक बुझे हुए दिए को जो प्रज्वलित करे, ऐसा कोई सामर्थ्यवान आचार्य, ऐसा कोई गुरु जिसके अंदर गुरुता का अहंकार न हो, जिसको ये भान भी न हो कि मैं किसी का गुरु हूं और कुछ मेरे शिष्य है. इतना विनम्र कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, हजारों दीपक को प्रकट कर सकता है, हजारों. कल मैंने पूरा लिस्ट दिया, भगवान महावीर ने कितने बुझे दीपों को जलाया, भगवान बुद्ध के चरण में आने वाले कितने लोग संबोधि को प्राप्त हुए, भगवान कृष्ण के चरण में आने वाले अर्जुन जैसे कितने लोगों को उन्होंने तार दिया. एक जला हुआ दिया अनेकों को जला सकता है. प्रॉब्लम हमारी शिक्षण में यह है कि दूसरे का दिया जलाने वाले का खुद का दिया बुझा हुआ है, तो दूसरे का दिया कैसे जलाएंगे? ये है जैन एजुकेशन. हालांकि ये तो समण सुत्तम के आधार पर मैंने जैन एजुकेशन बताया. फिर कभी कभी परेश भाई कैनल में कभी कभी ये भी कोशिश करेंगे उत्तराधीन सूत्र में जैन एजुकेशन क्या है, पूरा अलग से है. उत्तराधीन सूत्र का एक चैप्टर है बहुश्रुत कौन, और पूरा एजुकेशन सिस्टम है.
दसवें में एजुकेशन सिस्टम क्या है साहब, रिसर्च का विषय कोई पीएचडी करी हो तो आना ऊपर करे, जैन एजुकेशन लो, હું તમને ટોપિક આપી દઉં, કેટલા બધા ટોપિક. તો મંગલ કામના કરું, સમય થઈ ગયો છે, બસ મારી વાણીને વિરામ આપવાનો સમય આવી ગયો. કાલથી તો તમે શું કરશો, હવે બધાને એમ થશે કે કાલથી 1.5 કલાક સવારે 1.5 કલાક સાંજે કરશું શું કાલથી? હે એક 7 દિવસ 8 દિવસ ભગવાનની વાણીનું વ્યસન થઈ ગયું એવું લાગે. મને પણ તમારી સાથે 8 દિવસ એટલો આનંદ આવ્યો સાહેબ, એટલે આત્મ પરિણામ આપણા જાણે આમ શુદ્ધ થયા હોય એવું રિયલી પ્રેક્ટિકલી ફીલ થાય. તો બસ સમય નહીં લઉં વધારે. આપ સૌ પ્રત્યે મારી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને આ 7 દિવસ 8 દિવસ પ્રવચનમાં, કેમ કે હું પણ એક્સપર્ટ નથી, હું પણ પ્રેક્ટિસ કરું છું ડોક્ટરની જેમ. ડોક્ટર 50 વર્ષ સુધી પ્રેક્ટિસ જ કરતા હોય, તો હું પણ 30 વર્ષથી લેક્ચર આપું છું, પણ હજુ પ્રેક્ટિસ જ કરું છું. તો પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા તમારું ઓપરેશન કરતા કરતા ક્યાંક જરાક આડી અવડી નસ દબાઈ ગઈ હોય અને કોઈને હર્ટ થયું હોય, કોઈને એવું લાગ્યું હોય કે મને ઉદ્દેશીને બોલે છે, મારો ક્યારેય પણ એવો ઈરાદો હોતો નથી કે હું કોઈ વ્યક્તિ વિશેષને ઉદ્દેશીને બોલું. મારો ઈરાદો છે કે માણસ અંદરથી જાગૃત બની આ જીનવાણીના રસ્તે આવે. છતાં પણ કોઈને હર્ટ થયું હોય, અંતઃકરણથી આત્મ સાક્ષીએ, પ્રભુ સાક્ષીએ, આપ સૌની સાક્ષીએ આવા જીવોને મારા તરફથી ક્ષમા માંગુ છું, ક્ષમાની યાચના કરું છું, ક્ષમાની ભીખ માંગુ છું. ક્યારેય પણ આવો ઈરાદો છતાં પણ કોઈકને હર્ટ થાય તો પ્લીઝ ઉદાર ચિત્તે ક્ષમા કરજો. આવા ભાવ સાથે સમણ સુત્તમ વિરુદ્ધ, ભગવાન મહાવીરની વાણી વિરુદ્ધ, ગણધરોએ જે આશયથી આ ગાથાઓ ગુંથી છે એના વિરુદ્ધ કઈ બોલાઈ ગયું હોય, આશય એવો ના હોય છતાં બોલાઈ ગયું હોય, તો તીર્થંકરોની અનુપસ્થિતિમાં, ગણધરોની અનુપસ્થિતિમાં પણ એમની આત્માઓ પ્રત્યે હું ક્ષમા યાચના કરું છું કે જે કઈ ભૂલો છે મારી છે, જે કઈ વિશેષતા છે એ પ્રભુ એ આપની છે, એમ કરીને ક્ષમા કરજો. એવા ભાવ સાથે તપોવનમાં આ 8 દિવસનો યજ્ઞ, અમારે અહીંયા જે તપોવનમાં બધા બેઠા છે ને એ લોકો એમ માને કે 8 દિવસની કથા બેઠી છે. તો 8 દિવસની જે કથા બેઠી છે એ આજે કથા ઊભી થવાની છે અને આજે કથા વિહાર કરવાની છે, વિદા થવાની છે. તો ખૂબ ખૂબ અહીંયા પણ ઘણા બધા જે જૈનો નથી એને પણ અહીંયા બાળકો કાલે કહેતા હતા કે અમને તો અમારા કોર્સમાં છે અહીંયા તપોવનમાં કે બધા જ ધર્મોનો અભ્યાસ કરવાનો. તો 8 દિવસ 16 લેક્ચરમાં જૈન ધર્મનો પૂરો અભ્યાસ થઈ ગયો. તો ખૂબ ખૂબ આનંદ. હું ભીમસિંહભાઈ જે તપોવનના ચેરમેન છે, 1 મિનિટ વિનંતી કરું કે જરા આજના અવસરે 2 શબ્દો કહેવા માંગે છે. 1 મિનિટ તમારી લઈશ, પછી આપણે માંગણી કરીશું. જરા અહીં મૂકો ના, ઊંચો કરતો, અને ઊંચો કરતો, અરે આમ ઊંચો, હા બસ પકડી રાખો. ઉધારો આવે છે. ભીમસિંહભાઈ કરમુલ પુરુષાર્થ સ્કૂલ અને તપોવનના ચેરમેન છે. અહીંયા હું જે અવારનવાર આવું છું અને આ બધી સગવડ જે મળે છે આ ભીમસિંહભાઈ નું કન્ટ્રીબ્યુશન છે, જે કામ કરી રહ્યા છે. છેલ્લે 2 મિનિટ આરામથી 3-4 મિનિટ. જય જિનેન્દ્ર. આદરણીય અને વંદનીય શ્રમણજી, સમગ્ર જૈન સંઘ સિંગાપુર અને મીડિયાના માધ્યમથી સાંભળી રહેલા સમગ્ર દેશ અને વિદેશના લોકો અને તપોવનવાસીઓ, તો કેનલભાઈ કાલે તપોવનનો આભાર માન્યો. સમરજીને મેં વાત કરી કે તપોવનનો આભાર નહીં પણ સિંગાપુર વાસીઓનો આભાર માનવો પડે કે આ બીજી તક મળી છે. જ્યારે મારું એજ્યુકેશન અનુસંધાને ભારત ભ્રમણ શરૂ હતું એ સમય દરમિયાન શ્રમણજીની પ્રેરણાથી અને કીર્તિદાબેન અને ભરતભાઈના સ્પોન્સરથી હું સિંગાપુર પણ 6 દિવસ માટે
ત્યાંની એજ્યુકેશન સિસ્ટમને જોવા માટે આવ્યો અને એ જોયા પછી અહીંયા ભારતમાં પણ શું આપણે કરી શકીએ એના પ્રયોગો વિશેષ કર્યા. તો આજે એ માટે પણ એ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને આજે ખાસ તપોવનમાં દરેક ધર્મ વિશેની વાત સમજવાની હોય ત્યારે હું ખુદ પણ જૈન વિશે નહોતો જાણતો અને નિમિત્ત બન્યા છો આપ સિંગાપુર વાસીઓ કે પૂરી કથા 8 દિવસ જૈન ધર્મ વિશે અને એમાંય શ્રેષ્ઠતમ એટલે કે સમગ્ર જૈનની સમગ્ર પુસ્તકોનો એક નિચોડ એ આજે અહીંયા પ્રત્યક્ષ તપોવનમાં જ એમનું પારાયણ થયું અને એ માટે આપ સૌનો આભારી છું, ઋણી છું. અને આપને સૌને આમંત્રણ પણ છે કે આપ સૌ અહીંયા આ એક નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એને નિહાળવા માટે આવો અને અહીંયા અમારા વિદ્યાર્થીઓના માર્ગદર્શક બનો. ફરીથી આપ સૌનો આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ ભીમસીભાઈ. અને ખાસ કરીને ભીમસીભાઈ આમંત્રણ આપ્યું છે. અહીંયા પ્રોજેક્ટ આસ્થામાં જે વિદ્યાર્થીઓ આવેલા સિંગાપુરથી પણ હતા, જેની જુહી, રોશની, વિસ્મય, એ બધા લોકો અહીંયા આવી ગયા છે. અહીંયા સ્કૂલમાં પણ તપોવનમાં પણ અહીંનો માહોલ અને અહીંનું વાતાવરણ નિહાળી ગયા છીએ. હવે પેરેન્ટ્સને કહું કે આપ પણ અહીંયા આવો, વોલેન્ટિયર વર્ક કરવા, સેવા કરવા. આપ 5 દિવસનો 7 દિવસનો જે પણ અનુકૂળ ટાઈમ હોય, ખાલી અહીંયા બાળકોની સેવા કરવા, બાળકોને જે કંઈ તમારી ટેલેન્ટ છે ને શેર કરવા માટે અહીંયા તમને ઓપન ઇન્વિટેશન આપે છે. રહેવા, જમવાની, ખાવા પીવાની બધી જ વ્યવસ્થા અહીંયા પ્રોપરલી છે. અને હવે હું ધીરે ધીરે જ્યારે અહીંયા વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છું તો થોડુંક અહીંયા એનઆરઆઈ ની દ્રષ્ટિએ પણ થોડું સેટઅપ કરવાનું છે. કેમ કે આ બધા છે ને બહારના લોકો થોડાક એને જરાક વધારે સુવિધા જોઈએ, કહેવાનો મતલબ. એટલે એ સુવિધા અહીંયા થોડીક તમારા માટે એવો પ્લાન છે કે થોડીક વધારે સુવિધા થાય, જેથી તમે ટકી શકો, થોડાક 5-7 દિવસ રહી શકો એવી વ્યવસ્થા. તો મારું ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ કોરોનાની સ્થિતિમાંથી બહાર આવીને આપણે ઓપન અપ થઈએ ત્યારે વેલકમ ટુ ઇન્ડિયા, વેલકમ ટુ રાજકોટ, વેલકમ ટુ ભાનવડ, વેલકમ ટુ તપોવન એન્ડ પુરુષાર્થ. અહીંયા ખૂબ સરસ માહોલ છે. અહીંયાના બાળકોને તમે એમને જુઓ તો રિયલી અહીંયા ગુરુકુળ છે. વગર ગુરુએ આખું ગુરુકુળ અહીંયા ચાલે છે અને એ રીતે અહીંયા એક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. હજારો લોકો ઇન્ડિયામાંથી સારા બ્રેઇન અહીંયા આવીને શિક્ષણ આપે છે ફ્રીમાં. અહીંયા આવીને બાળકોને ગાઈડ કરે છે. તો અહીંયા એક કોમર્શિયલ આ વસ્તુને નથી કરી, એક વોલેન્ટિયર બેઝ ઉપર, એક સોશિયલ બેઝ ઉપર આ એક્ટિવિટી અહીંયા ચાલી રહી છે. ભરતભાઈને અને કીર્તિદાબેનને તો બહુ આગ્રહ કરી રહ્યા છીએ, પણ એમને તો એક મોટો સહારો મળી ગયો, કોરોના છે એટલે નીકળી જ ન શકે. અને એકચ્યુઅલી ટ્રાવેલ કરતા જ નથી, બાકી તો બહુ ટ્રાવેલ કરે છે. અને જ્યારે ખુલશે ત્યારે એ લોકો તો આવશે જ. પણ સૌને સંઘને વિનંતી, રાજેશભાઈ, દર્શનાબેન, એમના બાળકો આવી ગયા છે, તમે આવો અહીંયા. અને રોશનીબેન, બેબી, એના મમ્મી પણ સાંભળી રહ્યા છે. તમે લોકો અહીંયા આવીને જુઓ એનું વાતાવરણ. તો આમંત્રણ છે ભીમસીભાઈ તરફથી મારા. થેન્ક યુ. જય જય. સોરી, થોડોક ટાઈમ વધારે લીધો. છેલ્લો દિવસ હતો, રવિવાર હતો. મને થયું કે આમે પછી પૂરું થયા પછી શું કરવાના છે, એના કરતા થોડું વધારે કહીને સાંભળી લો, એ ભાવ હતો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સમનજી. વંદામી નમન સ્વામી સમનજી. જી જી જી. સમનજી, ભલે આજે છેલ્લું હતો સ્વાધ્યાય આજે, પણ તમે ક્વેશ્ચન તો તૈયાર કર્યા હતા એટલે જરાક પૂછી લઉં. ક્વેશ્ચન આપણે આપી દઈએ. ક્વેશ્ચન પોતે જ હોમવર્ક બનાવી લે અને પોતે જ ઘરે જ એને ચેકઅપ કરી લે, ટેલી કરી લે, માર્ક આપી દે. પ્રશ્ન હું ખાલી બોલી દઉં છું, સ્ક્રીન ઉપર જેને ફોટો લેવો હોય તો લઈ લો અને ઝૂમમાં મોકલી દેશે અને સિંગાપુર વાળાને ગ્રુપમાં મળી જશે. क्वेश्चन नंबर पहलो છે पीडी ओस्पेंस्की एवं उनके गुरु जीएफ के प्रसंग को अपने शब्दों में लिखो. ये जो मैंने पूरा प्रसंग कहा शुरुआत में, पीडी ओस्पेंस्की और गुरु जीएफ का, उसका प्रसंग आपको अपने शब्दों में लिखना है कि वो क्या प्रसंग था. दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के अयोग्य कौन है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो शिक्षा के योग्य नहीं है, ज्ञान लेने के योग्य नहीं है? वो जो मैंने लक्षण बताए कुछ. तीसरा क्वेश्चन, ग्रहण एवं आसेवन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रहण शिक्षा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आसेवन शिक्षा? उन दोनों को डिस्क्राइब करना है, खुद करना है, खुद चेक करना है.
चौथा क्वेश्चन, स्वाध्याय से होने वाले 5 लाभों को समझाइए। स्वाध्याय करने के वांचन करने के 5 बेनिफिट क्या है, उनको थोड़ा एलोबरेट करना है। और 5वां क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कौन कर सकता है, अंत में वो लिखना है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आप तैयार करके लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे मेरा व्हाट्सएप नहीं हो तो परेश भाई, कैनल भाई से ले सकते हैं। ओपनली यू कैन सेंड मी, सो आई वुड रियली लाइक टू सी यू योर आंसर्स। बाकी आप अपने लिए भी करें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू समजी। जय जिनेन्द्र भाइयों बहनों ने वडीलो, this is the last Swadhyay session with Samanji for Pajoshan 2021, and on behalf of the full Sangh, Samanji અમે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વારીપતિ માનીએ છીએ કે આ 9 દિવસ લાસ્ટ ફ્રાઈડે થી આપણે આ શનિવાર સવારનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂરા 8 સેશન્સ 8 દિવસના, so 16 મોર્નિંગ ઇવનિંગ કરીને કરી તો 16 સેશન્સ અડલ્ટ્સની યારે થયા હતા, એક સેશન જૈન શાળા બાળકોની યારે થયો હતો અને એક સેશન યુથની યારે થયો હતો. So we had the lap of all together 18 sessions with Samanji. So really, you know, I request all of you to turn on your cameras today so that Samanji can see everyone in this session, and all of you to really express your thanks to Samanji with a round of applause from wherever you're sitting, right? I think we truly have to appreciate the time that Samanji has spent on us, and the Swadhyay that we received this time around. એવો ઊંચો ગ્રંથ સમંજીએ લીધો છે સમન સુત્તમ, અને એવી સરળ ભાષાથી આપણે બધાઈને સમજાવ્યા છે. Like I said last night, it is really thank you સમંજી, ખૂબ આભાર. તમે ઘણી મહેનત આમાં કરી છે. અને અમારાથી આમાં ક્યાંય પણ વિનય વિવેક ચુકાઈ ગયો હોય, ખાસ કરીને તમે બધા ઓડિયન્સને ઘણીવાર કહેતા હતા કે ઓન યોર કેમેરા, પણ છતાંય પણ બધા શાય થઈને બધાનું મલ્ટીટાસ્કિંગ હોય અને નહોતા કરી શકતા, એના માટે ક્ષમા માંગીએ છીએ સમજી. અને ક્યાંય પણ તૈયારીમાં કે પ્રેપરેશનમાં અમે સમજણ ફેર થઈ હોય કે અમારી ભૂલ થઈ હોય તો મિચ્છામી ડુક્કડમ સમજી. એ અમારી જ વીકનેસીસ છે કે અમે ખાસ કરીને મારા જેવા જરાક ગુજરાતી અડધું આવડે ને હિન્દી એનાથી ને ઓછું આવડે, પણ તોય આમ એકદમ અટેન્શનથી ગૂગલમાં ટ્રાન્સલેટ કરતો જાઓ કે શું બની રહ્યું છે, અને તોય પણ ઘણું સમજાણું આવતે સમજી. એના માટે ખૂબ આભાર. સોરી, એકચ્યુઅલી તો યુ નો કમિટીની કે એરેન્જ કરવા વાળાએ હમણાં કેનલભાઈએ પણ શરૂઆતમાં કીધું અમારી ઘણી ભૂલો રહી ગઈ. એકચ્યુઅલી કોઈ જ ભૂલ નથી, બધું એટલું પરફેક્ટ. શું લાગે તમને? ઓડિયન્સ આખું બેઠું છે, ક્યાંય કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બધું જ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, બધું જ ઓડિયો વિડીયો એવરીથિંગ પ્રોપરલી મેનેજ કર્યું છે, કોર્ડિનેટ કર્યું છે. ભૂલો રહી ગઈ છે તો થોડી અહીંથી રહી ગઈ છે, ઘણી માઇક સિસ્ટમ, ઘણી વાર ઇકો અવાજ આવતો તો બીજું, પણ વેરી વેલ ઓર્ગેનાઇઝ ફ્રોમ સિંગાપુર જૈન સોસાયટી. નો એની મિસ્ટેક્સ ફોર અરેન્જિંગ ધ સચ એ નાઇસ પ્રોગ્રામ. તો કોઈ ક્ષમાની વાત જ નથી, ખૂબ સારી રીતે અરેન્જ કર્યું છે, એનો મને આનંદ છે. થેન્ક યુ સમનજી. અને ખાસ કરીને અમારો આભાર ત્યાં તપોવનના ભીમસીભાઈ માટે અને સૌ બાળકો માટે. ખરેખર છેલ્લા 3 દિવસ જે બાળકો કૃતજ્ઞસ્મી તમારો આભાર છે, એમાંથી મને પણ શીખવા મળ્યું. તો અહીંયા અમુક ભાઈઓને મેં પૂછ્યું કે આનો અર્થ શું થાય છે, અને એમાંથી મને પણ શીખવા મળ્યું. એટલે બાળકોને પણ ખૂબ આભાર કે એ લોકોના પણ આચરણથી અમે પણ શીખી છીએ કે ભલે અમે અહીંયા અત્યારે તપોવનમાં નથી, પણ એ લોકોના એક્શન્સ ને સપ્તરો ને ગઈકાલનો એ લોકોનો જે નાનકડો મ્યુઝિકનો પ્રોગ્રામ હતો, એમાંથી ઘણું શીખવા મળ્યું છું. ને ખૂબ આભાર ભીમસીભાઈને ને સૌ બાળકો તપોવનના. થેન્ક યુ કે તમે આવી સરસ વ્યવસ્થા 9 દિવસ માટે સિંગાપુર જૈન સંઘ માટે કરી. અને અમને પણ એવું કાંઈ નથી લાગ્યું કે સમનજી સિંગાપુરના સ્થાનકમાં નથી. ઉલટાનો અમારો માહોલ જ આમ ચેન્જ થઈ ગયો કે
વાવ, તપોવનની બેકગ્રાઉન્ડ. અને સમજી તમને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય કે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ પાછળ તરત ભગવાનની એક ડ્રોઈંગ છે. તો અમને તો એમ જ લાગ્યું કે અમારી પ્રતિમા જ પાછળ બેઠા છે મહાવીર ભગવાનના, કે બ્લેસિંગ થઈને જ આ બધા સ્વાધ્યાય સેશન લે છે. એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર સૌ લોકોને તપોવનમાં. With today's session, we come to the end of the Swadhyay session. And yes, so Samanji is just moving slightly the background, and you can see that nice drawing of Bhagwan at the back, right? And it has served as an inspiration in the last 9 days as we look at Samanji. Bhagwan apan darshan pachal thai jai chhe saras rite. So, you know, Pajoshan 2021 was another e-Pajoshan, and I would like to thank all of you for taking your time out to do this Swadhyay. સમય તમે કાઢ્યો તમારા માટે, આપણે બધાએ ભેગા થઈને પ્રગતિ કરીને જરાક આગળ વધ્યા, એના માટે congratulations to all of you. All the pravachans will be uploaded. 8 દિવસના તો થઈ જ ગયા છે. આજનો પણ પ્રવચન યુટ્યુબમાં અપલોડ થઈ જશે. એટલે જેને પણ મિસ થયા હોય કે પાછું રિવાઇઝ કરવું હોય, પ્લીઝ you can go to YouTube and listen to all the pravachans. And Saman Suttam ખરેખર એક ગ્રંથ એવું છે કે I think we should really contemplate and go deep in it. So the management committee has already uploaded all the YouTube, all the lectures on YouTube. Now, this afternoon, we will have the Aloina from 4 to 5 on Zoom, and then the Stanakvasi Samvatsari Pratikaman will start at 6:15. So request all of you to log in on a timely basis. And then tomorrow is the Samu Parna, apna 29 Tapasvi, je apne ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ ને wishing them all sukh sata. They will join us online on Zoom. The Zoom session starts at 9:30. The program proper will start at 9:45 sharp. Samanji pan આપણે join કરશે 10 વાગે સિંગાપુરના ટાઈમે, and we will get to hear Samanji's speech and Manglik tomorrow as well. So request all of you to join the Samuparna program as well. And on behalf of the MC, in this 9 days, if any of our actions in managing this Pajoshan, I know ઘણાએ હાથ ઊંચા કર્યા હતા, પર અમે સ્પોટલાઇટ જ કર્યા કે મ્યુટ ટાઈમે તમારું અવાજ ચાલતો હતો પણ મ્યુટ કરી દીધા તમને, તો જરાય પ્લીઝ દુઃખ નહીં લગાડતા. Sometimes the technology is also challenging for us to manage, but it was never our intent to not to highlight anyone. And I hope all of you really had a very nice spiritual time in the last 9 days. Right. With that, I will request Samanji to say today's Mangal part. Samanji. હા, માંગલિક પહેલા જેને ઉપવાસના પચકાણ લેવા હોય, હા, એ પેલા હાથ જોડી લે, પછી માંગલિક કરીશું. પેલા ઉપવાસ જેને હોય આજે ઉપવાસ એને પચકાણ આપું છું. કાલે સવારે 9:00 સુધી આજે ઉપવાસ ઉપરાંત વિહમ પિહારમ અસણમ પાણમ ખાદ્યમ સ્વાદ્યમ અનથા ભોગણમ સહસાગારણમ સબ્બ સમાહિ વત્યાગારણમ અપાણં ઓશીરા. માંગલિક ચત્તારી મંગલમ હરિહંત. હા, चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा. चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि. अंगूठे अमृत वशे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने समरिय मनवांछित फलदातार सर्व मांगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम. जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम.
Thank you. કૃતજ્ઞોસ્મી અમે આપના આભારી છે સમનજી અમે આપના Thank આભારી you. છે સમનજી Welcome, welcome. I have now allowed all of you to unmute yourself. વંદામી નમન સ્વામી. વંદામી નમન સ્વામી. चालू प्रवचन में नाम लिया भाविन भाई सबको इच्छा भी दुक्कड़म ऑन द स्पॉट मैंने आंसर देने के लिए सबको स्क्रीन पर लाने की कोशिश की, उनको अन्यथा लगा हो तो इच्छा वंदामि नमन स्वामी स्वामी પપ્પા મનહરભાઈ નગીનભાઈ દેખાતા નથી, નગીનભાઈ ક્યાં છે? નગીનભાઈ નથી ને? નીનાબેન, પ્રશાંતભાઈ, રુચિબેન, દિનેશ પગલી, નગીનભાઈ નથી ને? આગળ હતા સમનજી. કીર્તિદાબેન અમેરિકા છે ને? કીર્તિદાબેન ના હું આવી ગઈ, હું તમે આવી ગયા છો? ક્વોરન્ટીન માં છું હમણાં. ક્વોરન્ટીન માં છે. ભરતભાઈ ઘરે રસોઈ બનાવે, આ ક્વોરન્ટીન માં. ભરત રસોઈ નથી બનાવતો. ભરત ખવડાવે, રસોઈ નથી બનાવતો. છે બધા કામ વાળા છે. પણ અચ્છા મને એમ કે તમે ત્યાં કોલોરેડો ડેનવર માં રવિવારે આવી ગઈ. બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. બીજા કોણ છે? આ વડીલ અમારા. હા, ગાથાણી સાહેબ મજામાં? મજામાં. નમન સ્વામી. ગાથાણી સાહેબ બહુ જ પ્રેમ, બહુ લાગણી રાખે છે, બરાબર નિયમિત આવતા હોય છે ગાથાણી સાહેબ. બીજા કોણ છે? જરા સ્ક્રીન પર આગળ. હા, હા, મનીષભાઈ દોશી, જીનેશભાઈ ડગલી, બધા મજામાં? સરસ. ભાવિનભાઈ ઓલરાઈટ છો? 28 કરી છે ભાવિનભાઈ? હા, 28 કરી છે? ના 28 નથી કરી. અચ્છા, આ વખતે નથી. ઘણી વાર તપસ્યા કરતા હોય છે. બહુ સરસ, 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 સરસ. ચલો જી, જય જિનેન્દ્ર. Hello, everyone. We will end the Zoom session now. Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર.